बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है। ये कहावत जो है, ये पता नहीं कितने लोगों को पता है कि नहीं, बट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना को आज हम लोग बिल्कुल उस चीज को सच करते हुए आज हम आ गए हैं लाइव, और हम बात करेंगे चैंपियंस लीग के बारे में, एक ऐसे कंपटीशन में जिसमें इस साल हम है ही नहीं, राइट। तो हम बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस द गेस्ट्स। सो वी हैव जीतू भाई इज हियर। जीतू भाई, लॉन्ग टाइम, हाउ आर यू डूइंग? All well. How are you? हाँ, और प्रणय आया इसलिए मानस नहीं आया, तो प्रणय इज हियर फ्रॉम प्रणय we टीएफटी। have और yes. कैसा है भाई? अपन लोग सामने आमने सामने मिल नहीं सकते कभी एक दूसरे को. Have you seen हाँ, me and Manas together? You know, इन द सेम रूम। we don't. Yeah. So you haven't seen Batman also, but yeah, it kind of equates on the same situation. Have you seen Bruce Wayne and Batman together? No, right? नो, नो, राइट, एब्सोल्युटली नॉट। और वी आल्सो हैव ऑन पॉपुलर डिमांड परमेश्वर और परम। परम ऑफ कोर्स इज एन इंटर फैन, सो सीरिया पैनल में हमारा सुपर हिट शो है, उसकी बहुत डिमांड है, वो भी हम लोग जल्दी करने वाले हैं। बट परम इज हियर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द चैंपियंस लीग यार। थोड़ी बातचीत करते हैं चैंपियंस लीग के बारे में। ऑफ कोर्स हम चाहते थे और भी लोग हों, बट दैट इज माय मिस्टेक, मैंने एकदम लास्ट मिनट पिंग किया सबको, तो सब लोग अवेलेबल नहीं हो पाए। बट लेट्स स्टार्ट बॉयज, लेट्स स्टार्ट विद परम मैन। परम ब्रो, एकदम एकदम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछता हूँ स्टार्ट में। आप जिनके साथ बैठे हैं उनके साथ आपने लास्ट सीजन चैंपियंस लीग फाइनल खेला था, राइट? एंड यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू नो, जहां पे बात हो रही है कि इंटर मिलान बैंकरप्ट हो गया, राइट? दिस सीजन अगेन रन अवे लीडर्स एट द टॉप ऑफ द स्कूडेटो टेबल, ठीक है। चैंपियंस लीग में भी ऑलमोस्ट सब लोग बोल रहे हैं डार्क हॉर्स। अब मेरे को तो डार्क हॉर्स थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन चलो ठीक है, डार्क हॉर्स बोला बोला। बट व्हाट इज, थोड़ा सा प्रणय, so what's your take on it, what's your take on it and how do you see that problem, because I think कुछ उसका resolution भी होने वाला है ना? You're referring to the financial situation, right? So Yes, I am. So first of all, thanks for having me on the show. It's always good to be here and talk about the Champions League and anything in general. The thing is, पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, वो जो फाइनेंशियल सिचुएशन का जो मिथ है ना, the thing is the club is not actually on the verge of bankruptcy. This article comes out every year with a lot of mixed facts and inaccurate financial figures wherein they mix the owner's debt with the club's debt. So technically the 900 million debt you read is actually not 900 million. Part of it, around 350 million, is the owner's debt, which the club is not liable for. That's what the ownership took. So part of it is not our problem, and the other problem is the rest of the bond that is due in 2027. So abhi the major issue is the ownership change in hand, which is ownership की जो clarification है वो मई तक हो जाएगी, because जो लोन लिया है क्लब ने उसका रीपेमेंट डेट इज मई 20th 2024 टू बी वेरी प्रिसाइज। अगर वो लोन रीपे नहीं होता है, उसका ये रिपरकशन है कि द ओनरशिप will go to the hands of the loaning company, which is Oaktree Capital. That's the only repercussion. So we really don't have a debt of 900 million as a lot of inaccurate articles say. There are a lot of financial inaccuracies. क्या होता है ना, जो इटली में कैसा रिपोर्टिंग होता है कि जो जिन्हें फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो लोग सेंसेशनल आर्टिकल लिखने के लिए बहुत मिक्स अप कर देते हैं फिगर्स, or they do not report on the positives that happen. So while there has been a lot of commercial growth, जो revenues पड़े हैं वो कोई report करना नहीं चाहता. I mean, let me make it very clear. Qatar Airways has entered into a major partnership with Inter. Why would they do that if Inter was going bankrupt? As simple as that. And next season they're mostly going to become our main shirt sponsor. So there are a lot of inaccuracies, which is fine. I mean, you know, the thing is बहुत mass scale पे बहुत misreporting होती है. But I'll just make that clear कि Inter is not really on the verge of bankruptcy. Obviously, the situation is not rosy. I'm not trying to say that. We will benefit if we could get super rich owners, but that's not going to happen for an Italian club because the league is not really lucrative to invest in, unfortunately. I mean, PIF had also said before they either wanted to buy Inter or AC Milan, but they don't find the league lucrative enough. So that's just the sad reality.
So पर नहीं, bankruptcy तो नहीं है, उसका तो कोई टेंशन नहीं है. और हाँ, I mean, there's only so much you can correct people who don't want to listen as opposed to people who want to listen. So after a point, when we keep reading these reports as Inter fans, we just laugh it off. हर साल जब ये रिपोर्ट आता है हम लोग ग्रुप पे शेयर करके we just have a laugh over it because there's no point really, you know, being upset over it. So yeah, but it's not really that bad. It's recovering. We're not in a position where we can spend like Manchester City or Real Madrid. But yeah, it's way better than it was in 2020 when the pandemic hit. यार दैट्स ग्रेट यार. मतलब बिकॉज सीरिया का क्या होता है ना, एटलीस्ट अपने इंडियन कम्युनिटी में मैं एक चीज बोलता हूँ कि तुम मतलब, एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड क्वाइट अ लॉट. आई थिंक रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है यार. तो हम जैसे हम लोग को बहुत पता चल जाता है कि बार्सिलोना में क्या चल रहा है, रियल मैड्रिड में क्या चल रहा है, लिवरपूल में क्या चल रहा है. हमको ये तक पता चल जाता है कि ब्राइटन में क्या हो रहा है. टोनी ब्लूम का नाम सबको पता है, राइट? लेकिन अभी मतलब सुनिंग ग्रुप अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लोगों को पता ही नहीं. मतलब बराबर. नॉट लाइक मेरे को बहुत इंफॉर्मेशन है, बट आई थिंक दैट्स ग्रेट बिकॉज you know this is like a major myth buster moment even for me, because even I'll be honest, even I thought कि इंटर का हालत बहुत खराब है, right? genuinely खराब तो है, बट ये अगर ये आप 2020 में ज्यादा बोलोगे इट्स मोर एप्लीकेबल एज अपोज टू 2024. इंटर एज अ क्लब बहुत आगे आ चुकी है, एंड स्पेशली लकीली लास्ट सीजन जो हम लोग ने पिच पे परफॉर्मेंस किया, दैट वाज द बिग डिफरेंस मेकर. अगर वो परफॉर्मेंस नहीं होती तो इट वुड हैव थोड़ा प्रोबेबली ज्यादा खराब होती सिचुएशन, बट it is what it is. इंटर ने परफॉर्म किया पिच पे, एंड द फाइनेंसेस एज अ रिजल्ट वर वे बेटर ऑफ सीजन ऑन सीजन. तो it is obviously इतना खराब तो है नहीं situation. As fans we are calm, but obviously we would like to be in a situation where we can have owners that can actually थोड़ा pump in कर सके money. but ठीक है, हम लोग ओनरशिप को इतना भी इंसल्ट नहीं करते बिकॉज उन्होंने ही क्लब को वापस मैप पे लाया है. सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट एज वेल एज फैंस. प्रणय, सिटी का भाई क्या बोलता है? मतलब अभी तो सिटी का रन शुरू होने वाला है. दिस इज वेयर सिटी स्टार्ट प्लेइंग, राइट? अपना टाइम. हाँ, तुम लोग खेल रहे हो कोपेनहेगन के साथ. लेट्स बी ऑनेस्ट, मैसिव फेवरेट्स, राइट? कोपेनहेगन से तो मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट उसके पहले आई मीन निधि भाई, मैं एक चीज करेक्ट करूंगा. ग्रुप व्हाई लिवरपूल फैंस आई नो जीतू भाई, नहीं, व्हाई लिवरपूल फैंस आर हियर इन यूसीएल. क्योंकि एक इसका आंसर मैं दे देता हूँ. व्हाई लिवरपूल फैंस आर हियर इन यूसीएल, हम अगर एक पार्टी में नहीं आए ना तो वो पार्टी मतलब उसको हमको कैंसिल नहीं हो गया भैया. वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है लिवरपूल यूसीएल विंस में. तो इसलिए लिवरपूल फैंस विल ऑलवेज टॉक अबाउट यूसीएल. पेट में दर्द हो रहा है, डाइजीन खाइए और इनो पी लीजिए, थोड़ा शांति हो जाएगी. बट सिर्फ 2 क्लब हमको बोल सकते हैं कि हमारे पास आपसे ज्यादा है. बट सॉरी प्रणय, कंटिन्यू. ओके, मैं तो मतलब उस पे कंटिन्यू कर रहा था कि द वे यू स्टार्टेड कि कोपेनहेगन पे, एंड जीतू भाई का रिएक्शन भी आया. आई नो लाइक पूरे पैनल पे रिएक्शन आया, बट I'll just say this कि जिस ग्रुप से कोपेनहेगन आई है, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट इट्स चैंपियंस लीग, राइट? बट जिस ग्रुप से कोपेनहेगन आई है, जिस ग्रुप से क्वालिफाई हुई है, दे वर द लीस्ट फेवरेट्स to get qualified from that group. Let's be honest. Let's face the reality. Galatasaray, Bayern Munich, Manchester United. अगर मैं किसी को यहाँ पे इस पैनल में 6 महीने पहले बोलता कि कौन सी 2 टीम्स आप फेवरेट करते हो, तो आई एम प्रीटी श्योर कि out of all the including me, we would have put Copenhagen in the 4th position. I'm pretty sure. United को हम 3rd रख लेते, they finished 4th. बायर्न गलातासराय में हम शायद कंपटीशन कर लेते, या यूनाइटेड को हम फेवरेट्स कर लेते, गिवन द एरिक टेन हाग बॉल जो कि सब लोग फेवरेट्स कर रहे थे. तो मेरे हिसाब से फेवरेट्स एज मैन सिटी, यस, बट वुड आई अंडर एस्टिमेट कोपेनहेगन फ्रॉम द ग्रुप दैट दे हैव कम आउट? एब्सोल्युटली नॉट. मतलब एब्सोल्युटली नॉट. मतलब गलातासराय, मेरे को पहला मैच याद है उनका कोपेनहेगन का गलातासराय के अगेंस्ट, जिसमें दे वर लीडिंग आई थिंक 2-0, बट उसके बाद दे गॉट अ रेड कार्ड और समथिंग, और उसके बाद दे कंसीडर्ड 2 लेट ऑन गोल्स अगेंस्ट गलातासराय. दैट वाज द गेम वेयर दे अनाउंस्ड, एंड देन अगेन बायर्न के साथ खेलना. तो दे हैव प्रीटी मच एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग ऑल द 3 different opponents from different regions, I would say. मतलब आप
Galatasaray के against खेल रहे हो, मतलब you're playing against the fans. Then आप United में खेल रहे हो, heavy favorites. Then आप Bayern Munich के against खेल के आ रहे हो और तब आप आ रहे हो. तो I'm not saying कि यार मैं मतलब ऐसा अंडर एस्टिमेट उस वे में कह रहा हूँ कि यार नहीं इजी गेम में होगा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि पीपल हु आर थिंकिंग कि भाई ये जो कोपेनहेगन अजीब विल दोस्त होते हैं लाइक जो बोलते हैं यार भाई पैसे नहीं है इस महीने, वो ये प्ले कर रहे हैं बाय बाय। अरे जी तो भाई आप भी तो आई एम जस्ट गुरप्रीत का भाई सुपर चैट आया, बोल रहा है वाह क्या एक्टिंग कर रहा है लूंगा गुरप्रीत के और भी है, गुरप्रीत के और भी है, मैं लूंगा उसके चैट्स में लूंगा, रुक जा। पर क्या I would कर just रहा say this कि है? This is an but I epic would just comment. I know but I'm just saying this कि people who are thinking कि City will steamroll or they will just bulldoze past मतलब Copenhagen. I think those people are in for a big surprise. I really think so. I am not being any वो मैं यहाँ पे jinx नहीं कर रहा या ना मैं modest हो रहा हूँ, but I'm just saying कि ठीक है opponent है, respect the opponent as Guardiola philosophy भाई हम we will approach one game at a time, but the only positive as a City fan I would say is कि भाई हमारी squad पूरी now is Only well back positive. and हाँ Only positive. Only positive बोलेगा सीरियसली? मतलब ओनली बेस्ड ऑन द दिसंबर गेम्स जो हमारे हुए थे कि अगर मेरे पास कुछ क्रूशियल प्ले अब दिसंबर के आप रिजल्ट्स निकाल लो मैन सिटी के, तो मेरी और तब हम कोपेनहेगन गेम अप्रोच कर रहे होते तो मेरी भाई फटी होती, मतलब मैं ऑनेस्टली मेरी फटी होती क्योंकि दिसंबर वाज द ओनली हाँ तो मैं हाँ बोलो उस चीज बोलो। को बस मैं बोल रहा हूँ कि आई एम जस्ट हैप्पी कि वी हैव द एंटायर स्क्वाड बैक. रेस्ट आई वुड से कि हाँ ठीक है, विल सी द गेम एंड वी विल प्रॉब्ली स्कोर 4-5 गोल्स एट द एंड, बट ठीक है ले भाई, निकल गई सच्चाई एंड में। दक्ष दक्ष बोल रहा है प्रणय टॉकिंग लाइक हाउ पेप टॉक्स बिफोर स्पैंकिंग अ टीम। देखो मैं एक चीज बोलता हूँ एंड बिफोर जीतू भाई स्पीक्स एंड विल हैव जीतू भाई's ओपिनियन ऑन दिस। देखो एक बात मैं बोलता हूँ कि मैन यूनाइटेड ने इस सीजन चैंपियंस लीग में ना एक ही मैच जीता है, वो कोपेनहेगन के अगेंस्ट जीता था, ठीक है। और मतलब मैं और मानस थे स्टेडियम में, और हम लोग जिस होटल में ठहरे थे ना मैनचेस्टर में, वहां पे कोपेनहेगन के फैंस भी थे। आई विल टेल यू वन थिंग, यू विल यू विल एक्सपीरियंस एटमॉस्फेयर, राइट? वो भाई वो लोग हारे जीते जो भी हो, वो लोग दे आर ब्लडी लाउड, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फैन ग्रुप है। और मतलब मैं एक चीज बोलूंगा कि सिटी मोस्ट लाइकली दे विल स्टीम रोल, राइट? ठीक है, मतलब अगेन यूसीएल है, फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है, वो सब मैं मानता हूँ। ओवर 2 legs, कम ऑन मैन, आई मीन मे बी होम पे शायद ऐसा 1-1 निकाल लिया, 2-2 निकाल लिया, मानना बात को। इतिहाद में तो बुरी तरह पीट देंगे, तो मतलब 99.9999% तो वही होने वाला है। बट कोपेनहेगन वर्सेस सिटी विल बी अ गुड मैच बिकॉज कोपेनहेगन फैंस विल श्योर पुट अप अ शो एंड इवन कोपेनहेगन प्लेयर्स आर आल्सो, यार उनके प्लेयर्स भी बहुत जबरदस्त है। मतलब हम लोग जब उनका जो फुल बैक है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, भाई वो रोड रनर है यार, क्या भागता है वो। वो जे से नाम, जिसका नाम है जे से हाँ हाँ, जे से कुछ नाम है उसका। या माय गॉड, क्या भागता है वो बंदा, उसने गोल भी गजब मारा है। था, आई थिंक उसने गोल चैंपियंस लीग में गोल भी मारे उसने काफी. हाँ हाँ, मारा है ना बहुत। जेलरेट हाँ Yeah, Elias जेलरेट Jellert. हाँ जेलर्ट हाँ समथिंग, आई फॉरगेट। दक्ष बोल रहा है ट्रेबल जीतने के बाद भी अंडरडॉग गिमिक। हाँ भाई दक्ष, क्या बोले अब इसको, क्या बोल सकते हैं। ट्रेबल से याद आया जीतू भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल दक्ष थैंक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन। और ट्रेबल से याद आया जीतू भाई, क्या बोलते हो, ला लीगा तो ऑलमोस्ट इन द बैग। आई मीन अब आपका चांस है मॉडेस्ट प्ले करने का, लेकिन ला लीगा तो ऑलमोस्ट इन द बैग। चैंपियंस लीग में क्या बोलते हो, अभी क्या करने वाला है कार्लो? क्योंकि यहाँ पे चलेगा क्या वो बिना सेंटर बैक वाला स्ट्रेटजी, जीरोना वाला, क्या बोलते हो? Okay, before I answer that question, मेरे को सिर्फ एक चीज बोलनी है about Copenhagen जो प्रणय भाई इतना hype कर रहे हैं. They have not played, अभी मैं देखा था, search, they have not played an official game since the end of the group stage. Secondly, there are Denmark team that is in their league, they are third, तो वहां से भी वो third ही है.
आप निधि भाई आपने बोला कि फैन का बहुत ये करते हैं। मैं एक चीज बोलूंगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में 1 लाख लोग थे, वहां पे सब फैन इंडियन थे, फैन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप खेल सकते हो, जो इनके पास है, जो सिटी के पास है। एंड सिटी मैं आई वुड लाइक टू से दिस, मे बी कंट्रोवर्शियल, बट अगर एरिक एरिक बोल रहा एरिक हूँ अर्ली, हाँ नहीं, एनरिक एनरिक, अर्लिन हार्ड अगर सिर्फ 20 मिनट भी खेले ना ये पूरे इसमें, फिर भी ये जीतेंगे। दे आर एरिक नॉट। तो हाँ, एरिक तो अल एरिक तो हिलाल खैर, चला गया। हाँ नहीं, वो भी एरिक है। तो अल हिलाल चला गया। आई Yeah, एम एरिक लापोर्ट, वो तो अल हिलाल चला हाँ गया। हाँ। तो so there is no, like I don't think it is everyone I think wanted Copenhagen, जिसको नहीं मिला, अभी इन लोग को मिला, तो I think it's going to be an easy game for them. Yeah, I mean there will be moments कि बोलेगा रे क्या अच्छा प्लेयर है, क्या इसने ऐसा किया, वो तो नॉर्मल है क्योंकि it's a football is a two team game, but it's going to be one of the smoothest ties that you have. That is the first thing, because I don't think कि मतलब हाँ, प्रणय भाई, I know he doesn't want to jinx his team and I get that because I don't want to jinx my team. बट पॉइंट ये है कि भाई क्या है, बस क्या है, बर्नबा घूम के आ रहा और फिर बोलो मोमो के पैसे नहीं, बस क्या, like doesn't make sense. So coming to no center back, firstly it is not out of ये हमको कोई चुल नहीं है, या हमको कोई ये नहीं है कि हम दिखाना है कि हम बिना सेंटर बैक के खेल सकते, ये इंजरीज है। इंजरीज के बाद भी वी हैव नॉट स्ट्रेंथेंड बिकॉज आई डोंट गॉट नो फॉर व्हाट रीजन. But Ancelotti is the kind of coach who will not complain. Like if it was Pep Guardiola or Jose Mourinho or any normal person would also complain कि मेरे पास यार सेंटर बैक नहीं है, 2 लॉन्ग टर्म इंजरी, मेरे को एक खरीद के दे दो. हमारे सेंटर बैक है नाचो चुआमेनी और कारवाहाल इज आल्सो बीइंग Carvajal. थ्रोन. Yeah. Carvajal, I mean Carvajal will not play center back for me in five side in on a turf in Mumbai यार. तुम उसको कैसे खिला सकते हो, बट वो खेल रहा है. तो लाइक मेरे लिए तो दिस इज लेकिन अनबिलीवेबल. हाँ जी, लेकिन बोलिए. आप जिरोना को 4-0 पीट भी तो रहे हो ना जीतू भाई, वो भी I'll तो tell you बात है why ना this ये। happens. I'll tell you why this हाँ, happens. When Real Madrid is sort of hurting or under attack, or where they are, हम हमारे में फटी पड़ी है, right? तब Real Madrid का असली कलर बाहर आता है. Real Madrid का Real Madrid, all why Real Madrid is known for its comeback, because till we go goal down, we don't wake up. We're like अरे हाँ ठीक है देख लेंगे. If we are lazy, if we are relaxed, if we are chilled, जैसे हम लास्ट सीजन थे, बिकॉज हमने उस सीजन पहले हमने जीता था सब कुछ. So you are just chill, हाँ ठीक है देख लेंगे कर लेंगे kind of vibe, right? So when you are without a proper center back pairing and you have to play well, then they are like boss okay अभी तो गोल मारना पड़ेगा because हम लोग गोल शायद खाएं. So Girona was a one-off. I will not say it is the norm. It should never be the norm because you cannot play Chouameni and Danny Carvalho as center back. This is ridiculous. तो ये चलेगा, थोड़े गेम में चलेगा, थोड़ी ओपोनेंट्स के खिलाफ चलेगा. लॉन्ग टर्म में वी विल हैव टू either get Militao back sooner than we want, or we'll have to do something. And the problem is even our second team center backs were injured for the last game, so we couldn't even promote 2 guys from there. जैसे Barca ने किया. I mean, it didn't work out well for Barca because they drew 3-3 over the weekend. But we don't have center backs in the system. तो ये नहीं चलने वाला है. And we just hope that our center backs come back जल्द से जल्द. And La Liga, yeah, I mean, we're comfortable position right now. I'm touch wood. I'm not going to jinx it. But Champions League is, round per round, depending who we get next. If we get City next, then I'll be singing a different tune. परम प्रणय थोड़ा तुम लोग का ओपिनियन बताओ. तुम लोग को नहीं लग रहा है जीतू भाई थोड़ा ज्यादा डाउन प्ले कर रहे हैं? I mean, मुझे लगता है he has a point because again, even if you watch Girona this season, if you notice the trend of how they play, there's a lot of verticality, a lot of centre back, both the centre backs committing forward and all, and you could see in that game ki ye just using this one game as an example ki Real Madrid with the attack they have, if you give them any kind of space, they're just going to kill you. As simple as that. Especially the form in which this season, especially Vinicius and Rodrigo are in general. So I mean, he has a point. The thing is, abhi to I feel against Leipzig, even without the centre backs, वो लोग manage कर सकते हैं because Leipzig have their own issues defensively this season. You watch them; it's not really that great. Apart from Simakan performing well, there is no one else who has really stood out. And if you notice their beginning, the first matches of 2024, अगर आप वो game देखोगे against Stuttgart, absolutely hammered with some very poor defending patterns, or I think
Real Madrid's maybe as like last season, Real Madrid might have a hard time away to Leipzig. मुझे लग रहा है because I think last season Leipzig beat you guys if I'm not wrong at home, and but I think at the Bernabeu Real Madrid ले लेगा overall over the tie. I feel they will take it, and again as Jitu bhai said, this is their competition. I mean, we have seen it time and again. As cliche as it sounds, जितना repetitive वो sound करता है, यही competition है जिनमें जिधर इनका best बाहर आ जाता है, be it against any side. Obviously, you can have at times they will struggle, as we have seen in the past, like last season when Manchester City did what they had to. So, I mean, I feel again it's all dependent on the draw, but I feel depending on what history suggests, I feel for Real Madrid semi-final to minimum हो सकता है. Again, all dependent on the draw, but hypothetically speaking, I feel semi-final तक तो वो लोग जाएंगे. I can't see them below that. It's very difficult to imagine if you just see the general trend, even despite injuries, because they always find a way. That's just them. So, प्रणय, तुम लोग ने तो पिछले सीजन you handed Real Madrid one of their biggest defeats, 4-0. जीतू भाई 4-0 आप लोग, मेरे को एक 2009 एनफील्ड याद है, राइट? 2009 एनफील्ड, एंड उसके बाद मेरे को 2023 ही याद आता है. I don't think you've lost that badly. Not in the Champions League. Yeah, the Champions League, I don't think we've lost that badly. 4-1 we lost to Ajax, but by what? हाँ, Champions League में we've not lost 4-0 to. वही दो लॉसेस मेरे को दिमाग में आते हैं. एक बार लिवरपूल ने हराया था और एक बार सिटी ने हराया 4-0, और एक बार आयाक्स, जो लोग बोल रहे हैं. यही दो आते हैं दिमाग में. Yeah, correct. No, that's true. क्या बोलता है? Would you agree Real Madrid as one of the favorites? मतलब इसमें क्या, मतलब फंसा नहीं चैंपियंस लीग एंड नहीं फंसाने वाली बात क्या, लाइक इट्स लाइक क्या, मैं इस पे क्या बोलूं, लाइक इफ इट्स चैंपियंस लीग एंड रियल मैड्रिड बोथ गो हैंड इन हैंड, मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट निधि भाई. मतलब चाय और चीनी की बात कर रहे हो आप तो एक तरह से कमबैक और पूनम पांडे की बात हो रही है. कमबैक और रियल मैड्रिड, एंड तो मतलब टू आंसर दैट क्वेश्चन, आई एम अलाइव गाइस, आई एम अलाइव. Real Madrid are still alive. वो आज ही इनफैक्ट मैंने वो रील डाला भाई कि मैंने रियल मैड्रिड का 14th ट्रॉफी, वो जहाँ पे पापा पेरेस का फेवरेट स्पॉट जो है वहाँ पे मैं देखा, तो 14th वाला एकदम लाइट में, एकदम सबसे थोड़ा लाइटिंग ज्यादा उस पे कर रखा था, लिखा हुआ था. फिर मैं ऐसे देखा, फिर मेरे को सबसे पहला फ्लैशबैक वही आया कि भाई अच्छी तो लग रही है ट्रॉफी, बट जिस तरह से रियल मैड्रिड ये ट्रॉफी जीती थी भाई, एंड आई सेड दैट अर्लियर आल्सो, लाइक मेरे को चेल्सी के अगेंस्ट फाइनल हारना इतना नहीं चुभता. लाइक आई डोंट इवन केयर कि वो काई हावर्ट्स ने गोल मारा और हम हार गए और चैंपियंस लीग फाइनल मारे भाई, लेकिन वो जो रियल मैड्रिड ने जो वो हराया था ना हमें सेमीफाइनल में, पूरा दोनों लेग पे, मतलब वी डोमिनेट. ऐसा पहली बार हुआ होगा इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल की कोई टीम 180 मिनट्स डोमिनेट करे, ठीक है, 180 मिनट्स डोमिनेट करे एंड देन यू लूज द गेम इन 6 मिनट्स. तो वो दुख जो है ना रियल मैड्रिड की 14th ट्रॉफी जो उनकी जो ट्रॉफी ने मुझे दिया है भाई, वो बहुत ही वो है. तो एंड रिगार्डलेस, मतलब रियल मैड्रिड का कोई भी आप कैंपेन निकाल लो, चाहे वो अच्छी टीम हो, चाहे आप उन्हें डाउन प्ले कर लो, चाहे आप उन्हें फेयरली रेट करो, दे विल बी ऑलवेज फेवरेट्स बिकॉज वन गेम यू हैव टू प्ले इट बर्नबेउ, और वहां पे तो मतलब मतलब वहां पे तो आप नहीं जीत सकते, बहुत ही मुश्किल है आपको वहां पे जीतना. सो आई थिंक जीतू भाई बीइंग मॉडेस्ट, थोड़ा यहाँ पे मैं उनको यही बोलूंगा कि थोड़ा वो मॉडेस्ट है, एंड ठीक है. बाकी अभी रियल मैड्रिड इज नॉट आवर प्रॉब्लम अंटिल वी फेस देम ऑफ. सो फाइनल में मिले, सेमीफाइनल फाइनल पे ही मिले. Yeah, likewise. I am also not looking forward to playing City in any form. So I'm very happy. I'm not being modest. मैंने ना like in the and this is just the course of my fandom, I've seen us lose a lot more Champions League games than win Champions League finals, right? I mean मैंने 5, 6, 7, 8 ही देखे, तो और उससे कहीं ज्यादा मैंने losses देखे. तो I don't. It's not about downplaying. It's just that City have a better team this year and they are amazing. तो I don't want to sound like अरे हमारा है, हम लोग ने ये किया, हम लोग ने वो किया. I mean मेरे पीछे 2 ऐसे प्लेयर है, रोनाल्डो और डी स्टेफानो, जो 5 ट्रॉफी जीत के बैठे, बट वो पास्ट. So going on current form, we are
Yeah, of course. Semi-final is a requirement also for one reason. If we don't get the semi-final, the pressure will be on Florentino Perez, and Florentino Perez does not like pressure. He likes कि भाई सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए. The pressure will not come on Carlo or the team because सबको मालूम है कि Carlo ने has done his best with the current team. So to avoid that, he will do everything to make sure कि हम semi-final तक पहुंचे ताकि उससे pressure कम हो. You know. जीतू भाई, योर इंटरनेट इज लैगिंग अ लिटिल बिट. आदित्य का एक क्वेश्चन है, वो हम ले लेते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू चैंपियंस लीग अगेन. Pam, what's going on with the stadium issue of Inter? Will you guys continue to play in San Siro or redevelopment or make a new stadium? So Over to you, अभी brother. as of things stand, अभी दोनों clubs are going their own way because the thing is, एक मैं clear कर देता हूँ, San Siro, Miazza, whatever you want to call it, is not owned by either of the clubs. ये city own करती है और इसमें बहुत पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है. द मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिशियंस को नया स्टेडियम नहीं चाहिए. दे आर वे टू नॉस्टैल्जिक. दे जस्ट वांट द ओल्ड स्टेडियम टू बी देयर. एंड मैंने आई थिंक ये लास्ट पॉडकास्ट पे आपके बोला था जब मानस ने पूछा था कि द मेन रीजन वो लोग ने जो दिया है, दे डोंट वांट टू डिमोलिश द स्टेडियम, इज जो सेकंड टियर है, it is the only the second tier is of historical importance, so you cannot demolish it, whatever logic that is. तो वो उधर तो नहीं होने वाला. तो दोनों क्लब्स आर गोइंग देयर सेपरेट वे. एसी मिलान का टॉक्स सैन डोनाटो करके रीजन में चालू है और इंटर का आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी कॉल्ड रोजानो एरिया करके है, उधर चालू है. प्लान्स दोनों क्लब ने सबमिट कर दिए, अपने फीजिबिलिटी स्टडीज चल रही है. इट विल टेक टाइम. इंटर्स प्लान, जस्ट स्टिकिंग टू इंटर, है कि 2028-29 तक स्टेडियम रेडी हो खेलने के लिए. अगेन इफ यू आस्क अबाउट द फाइनेंसेस, ये थर्ड पार्टी फाइनेंसिंग होती है. आप एक अलग कंपनी सेटअप करते हो, जैसे आप ग्रांट्स लेते हो, सब्सिडीज लेते हो, स्पॉन्सर्स लाते हो और उससे पेमेंट होता है. सो इट्स नॉट रियली डायरेक्टली ऑन द क्लब और लॉन्ग टर्म पेमेंट होती है बहुत, ओवर 20-25 ईयर्स मिनिमम, इवन इन सम केस 20 ईयर्स. सो ये क्लब पे इतना बड़ा बर्डन नहीं है. बट दोनों क्लब्स को चाहिए स्टेडियम बिकॉज कमर्शियली वी डोंट अर्न मच फ्रॉम सैन सीरो. वे हम लोग उल्टा हर सीजन अराउंड 10 मिलियन रेंट पे करते हैं, विच इज अ लॉट. तो और ये फीजिबल नहीं है. तो yeah, both clubs are going their own way, and while the city wants both clubs to stay, that's not happening mostly. The clubs are just not convinced. And the thing is, San Siro में जाना risky है बहुत. I mean, आप अगर third tier पे बैठोगे, there are things breaking over there, आप गिर सकते हो, risk तो बहुत है. तो there is just no point of staying in the stadium अगर the city is not going to redevelop it the way the clubs want it. नाइस. हाँ यार, वो तो है. बट थैंक्स फॉर द कंट्रीब्यूशन यार आदित्य. गुरप्रीत, आपका जो इंटर वर्सेस एथलेटिको वाला क्वेश्चन है ना, वो हम लेंगे जब व्हेन वी टॉक अबाउट द ओपोनेंट्स और सारे मैचेस की बात करेंगे तब. बट प्रणय यार, मेरे को एक बात बता. चैंपियंस लीग में देख, ये सीजन अभी तक तो यही न्यूज़ है कि यही फॉर्मेट है चैंपियंस लीग का. नेक्स्ट सीजन से फॉर्मेट चेंज होने वाला है, राइट? और मतलब वो सुपर लीग वाले डिस्कशन में नहीं घुसेंगे बिकॉज इट हैज बीन डन टू डेथ, राइट? वो मतलब इट्स लाइक कितना उस पे ऊपर बात करेंगे. बट सिटी के लिए मतलब एक एक पेप ने अभी एक चीज बोली थी कि वी वुड ऑल लाइक टू विन द ट्रेबल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. उसने बोला कि ये कभी हुआ नहीं है इसीलिए, राइट? सिर्फ एक बार हुआ है, राइट? तो वो स्टेटमेंट से तू अग्री करता है? तेरे को लगता है प्रेशर सिटी के ऊपर है? और वुड यू से कि सिटी को मतलब इट डजंट मैटर बिकॉज सिटी का अपना मिनी ट्रांजिशन एक तरह से चल ही रहा है? क्या बोलता है? प्रेशर इज तो द आई प्रेशर मीन ऑन सिटी? हाँ, इज द प्रेशर ऑन सिटी? आई डोंट थिंक सो. मतलब सिटी के ऊपर प्रेशर है अभी फिलहाल के लिए बिकॉज I mean we have been favorites for the last, I think till the time मतलब जब से पेप आया हुआ है तब से हम favorites रहे ही हैं. I would say कि मतलब first 2-3 सीजन तो build करने में लग गया अपने को. But अगर हम 2017, 18, 19 के भी कैंपेन्स अगर आप देखो, टीम देखो, जब हमने सेंचुरियन भी करा था तब भी हम फेवरेट्स थे, उसके बाद भी हम फेवरेट्स थे, चेल्सी के अगेंस्ट फाइनल में भी हम फेवरेट थे. बट यू नो देयर वाज सम लक फैक्टर दैट वाज इन्वॉल्वड. तो आई थिंक पिछले 5-6 सालों में हम फेवरेट्स तो हर साल ही रहे हैं मेरे हिसाब से. मतलब फेवरेट्स का मतलब ये नहीं कि सिटी इज दी ओनली टीम. फेवरेट्स उस कैंपेन में 3-4 क्लब्स रहते हैं. रियल मैड्रिड ऑलवेज इज देयर. तो बट आई थिंक प्रेशर तो यार देखो मेरे हिसाब से प्रेशर तो नहीं है अभी सिटी के ऊपर, क्योंकि जहां तक मेरे को ऐसा लगता है विद गार्डियोलास प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हेनेवर एनीथिंग गोज लेफ्ट, तो उसका यही है कि यार वी हैव ऑलरेडी अचीव व्हाट वी हैड टू अचीव. मतलब हमने ट्रेवल कंप्लीट कर लिया है, उसके ऊपर अब आप
आप उस पीक के ऊपर आप एक और पीक अब आप हिट नहीं कर सकते, लाइक व्हाट एल्स यू कैन विन। हाँ, अब बहुत सारे लोग शायद सिक्सट्यूपल बोलेंगे, जो विच वी मिस्ड आउट ऑन दैट, बट आई थिंक चैंपियंस लीग जीतना ही पहली बार, दैट आई थिंक टुक ऑफ अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम गार्डियोला, एंड आई थिंक उसके बाद आप कभी भी देख लो गार्डियोला के यही स्टेटमेंट रहे हैं, दैट लाइक द ही इज अचीव्ड, उसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स लेफ्ट फॉर हिम टू विन। तो हाँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर हम कंपटीशन पे देखें तो हाँ, जब आप हर एक कंपटीशन में आप इतने एक स्क्वाड वैल्यू के साथ जा रहे हो, तो हर एक गेम का आपका मोटिव तो जीतना ही है, एंड दैट गोज विद ऑलमोस्ट एवरी टीम। बट गार्डियोला के लिए स्पेशली, मतलब फ्रॉम द फैंस पर्सपेक्टिव अगर मैं बात बताऊं, बिकॉज वी नो दैट देयर इज ओनली लिटिल टाइम, इवन विद गार्डियोला हर साल वो एक्सटेंड तो कर रहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट, बट I एज अ think, फैन, I think एज अ next फैन, season, I I think next मतलब season it. not next, we don't know, like we don't know, like हम यहाँ पे बैठ के तो we can't, ऐसी तो कोई न्यूज़ है नहीं, but I would say कि पता तो किसी को जब कुछ तक नहीं वो होता है, है, क्लॉप का किसको लगा था? पता तो true, so we don't know, like football things happen very fast, like Zlatan has said, but I would just say कि जब तक गार्डियोला है तब तक तो मैं चाहता हूँ कि भाई, I think जितनी ज़्यादा हम ट्रॉफीज कैचअप कर सकते हैं अपने राइवल से, चाहे वो यूनाइटेड के प्रीमियर लीग टाइटल्स हों, डोमेस्टिक अगर आपको कोई और जितने भी, क्योंकि अभी पेप गार्डियोला एरा विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एजेस इन फुटबॉल, फॉर सेंचुरीज, मतलब ये जो एरा जो सिटी का है, ये सेंचुरीज में रिमेम्बर होगा। जैसे हम रियल मैड्रिड का, हम स्टार्टिंग का 19 जब चैंपियंस लीग स्टार्ट हुआ था, 5 साल का एरा, अभी भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज से 50 साल बाद भी करेंगे, 100 साल बाद भी करेंगे, द क्लब विल बी टॉक्ड अबाउट। तो मेरे हिसाब से जो सिटी का ये वाला एरा है ना, इट इज फॉर द सेंचुरीज। तो इसमें हम जितना ज्यादा जीत सकते हैं, जितना ज्यादा हम ट्रॉफीज वो कर सकते हैं, बिकॉज पोस्ट पेप गार्डियोला इट्स ओनली रीबिल्ट, एंड आई डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होगा। सो for that, I think for fans, yes, I would want to win every trophy that is there on the stake. But I think Right. Guardiola के ऊपर से तो यार वो हट गया। I think we won the treble, so ठीक है। मैंने तो अपनी पीक हिट कर ली है कि भाई जब वो ट्रेबल जीते थे उसके बाद लोग कुछ भी बोल रहे थे, लोगों को जो बोलना था, आई रियली डिडंट केयर, आई डिडंट केयर अबाउट शिट। क्योंकि वो होता है ना कि आप एक फुटबॉल का पीक हिट कर लेते हो कि भाई अब आपने क्लब को सब कुछ जीतते हुए देख लिया है। तो मेरे लिए तो वो चीज नहीं है, बट हाँ, एवरी ईयर इट्स लाइक वो एक मेंटालिटी जैसे रियल मैड्रिड की रही है कि चाहे आप 3 बार जीतो, थ्री पीट करो, विच इज ह्यूज। तो तब उस मेंटालिटी को लेके आना, इंस्टिल करना इज समथिंग आई थिंक पेप का जॉब रह गया है कि भाई हर साल जब हम जा रहे हैं तो रियल मैड्रिड वाली मेंटालिटी होनी चाहिए कि आप जा रहे हो तो सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए जा रहे हो। Do you guys agree? Param, Jeetu, do you guys agree? No pressure on Pep? Param, Param, you're on mute, bro. Yeah, sorry. No, I think I agree with him because I think the main talking point was over the years was him lifting the Champions League trophy with Manchester City in the first place, and that is the thing that was always escaping him. Even that final against Chelsea, I think before the lead up to the final, he always felt that City was going to take it, edge it at least, but obviously that didn't happen. Then, so I think that was the big pressure point. And even last season, honestly, it could have gone either way. If you do remember the final, well, I mean, if Lukaku doesn't make those blunders or whatever, you never know. So the thing is, I think, as he said, that's huge pressure relieved, and as he said, I think it's about sort of continuing that cycle. I think I agree with him. You don't know when Pep will leave. I personally think I don't think there's a long sort of time left before he eventually leaves. And I think his job is now to set that platform or at least maintain करना वो, ताकि जो भी अगला कोच आए वही cycle continue करे. Because जैसे I don't know if Pranay can correct me. Who said this? I think it was Pep who once said that he wanted to open a winning cycle like Real Madrid. At some press conference last season, he had said, if I'm not wrong. So I think I'm pretty sure clearly वही उनका goal है. Because what else is there for them to do? They want to do is to continue winning at the end of the day. So, and I mean, as discussed several times, उनके पास squad तो है. It's just about, you know, some luck here and there with the Champions League draws and stuff like that. And uh, they have obviously the squad to do it again if needed. So I think Pep ka wahi hai. Even if he doesn't win it this season, I don't think it's a big deal. Even if he just wins the Premier League, for instance, and he goes, then still that is on a high because usne already kar diya what he has to do, in my opinion at least. You can feel free to disagree, obviously. Jeetu bhai?
So firstly, I want to say I hate Pep Guardiola. वो मतलब I hate him. Okay, I love you, but you know I hate him. So which is why what I'm going to say मेरे दिल पे पत्थर. Pep has achieved. I agree that he's already hit his peak. Anything he does now is equaling the peak or is just a lateral move, right? I completely agree with that. Pep, in a way, is very psychotic in the sense, not in a negative way, but in a psychotic way to win, to do better. He has already done this at Barca. Then he goes to Bayern, he wins the league. Like, he does not have to do any of this without even coming to Manchester City. He is already a very good, well-renowned, successful name in football. वो जब इधर आता है मैन सिटी पे वो वापस शुरू करता है कि चलो ट्रेबल जीतना है, ये करना है, वो करना है ना. मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं मतलब उससे बेतहा नफरत करता हूँ गांडू से, पेप ग्वार्डियोला से, क्योंकि मैंने उसके बहुत गेम खेले मेरे टीम के खिलाफ. तो बट उसने जो ये किया है सिटी पे, वो he is I mean he's just doing it because he has a drive within himself, and his exit or downfall or whatever you want, whenever he leaves will be because he's done. Like how Klopp said, I'm done, I don't have the energy. Yeah. That will be the only time Pep Guardiola will step aside or take a couple of years off before he does something else. And that what is that City has to extend. कि भाई तेरे को हम pressure नहीं दे रहे. We just keep continuing. Let's build this legacy. You're worrying on the treble. जीतते जाओ, जितना like Pranay bhai said, just keep winning. So like he is only like he is driven by himself. He's only driven by what he wants to do. And the day he feels कि हाँ चलो मेरा हो गया, because legacy is set है ना. The platform is set. There's nobody. I mean, apart from a few toxic United and maybe Real Madrid fans like me who will Pep whatever, who will probably abuse it. But वो तो legacy set है यार. What he's done at both Barca and at City is incredible. I mean, as Joris were talking about Real Madrid, ये वो हमने कभी ट्रेवल किया ही नहीं हमारी हिस्ट्री. Yeah. Nah, Liverpool. I mean, Inter has done it obviously, but such great clubs have not achieved, and he's done it at two clubs. So kudos to him. But once all his energy is sort of sucked out, and once he's lost the love for the game, because he definitely has love for the game, right? एक बार वो खत्म होगा तभी वो step aside करेगा. उससे पहले तो भाई ने सब किया, क्या करना बाकी नहीं है भाई. He can. Maybe the only lateral thing I can think of is international football. Or मुझे honestly, my opinion only, I think that is the football. तो he does not वो नहीं करेगा. हाँ, he नहीं करेगा. Secondly, Pep Guardiola will never manage international, तो नहीं करेगा. हाँ. you never know. Stranger things have happened. नहीं, But नहीं. एक super chat आई है आदित्य कि Pep won't leave his brother is also involved in Girona as president, 47% stake. CFG has really tied him financially. Yeah. यार देखो आदित्य, this is correct. First of all, thank you for the contribution. Will never leave, पता नहीं. I think at some point everybody leaves, right? At some point हर चीज का एक end और beginning होता है. तो होता ही है. हाँ, तो वो तो होगा ही. But the problem is this conversation branches out. A lot of people are not emotionally ready for this conversation, so I'll not open that can. Right. So I'll not open that discussion because a lot of people are emotionally not ready for that conversation. So let's leave it at that. But the point is that I think Spain, I agree. I don't think he'll ever manage Spain. वो नहीं होने वाला है. Can I add one thing to Aditya Aryan's point? He may go and become president of Girona. वो भी option है. He could become. And by the way, Pep is specifically from Girona, not मतलब Barcelona. Maybe he is from Girona. Sorry, Chitu bhai, continue. No, that was it. I said maybe when he leaves, we were not talking about leaving football completely. We were talking about a different role for Pep Guardiola because coaching में उसका हो गया, because he's done it at two clubs. He's done one in Germany. So maybe he'll do something else. He'll own a club. Maybe he'll go buy a country and then take that country to the World Cup. That could be his thing. You never know. If Pep Guardiola यार, वो कुछ भी कर सकता है यार. तो वो वाला सीन. मतलब शिवाजी का रजनीकांत वो ऐसे चल के जा रहा है तो पीछे रोड बनते जा रहे हैं और फिर सबको वर्ल्ड कप में ले गया. बट कमिंग टू एक दो चार और क्वेश्चंस हैं, एंड लेट्स टॉक अबाउट one team. I really wanted some Barcelona representation here
बट यार वो अनफॉर्चुनेटली आज हो नहीं पाया बिकॉज सब लोग बहुत बिजी थे. बट आई विल स्टार्ट विथ यू यार प्रणय, सिंस पेप की बात निकली है तो बार्सिलोना चलो लिंक्ड ही एक तरह से. यार बार्सिलोना ला लीगा में तो बहुत हालत खराब है, राइट? मतलब 10 पॉइंट पीछे हो गए हैं अब तो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ला लीगा जीतना. तेरे को क्या लगता है बार्सिलोना के, ये क्या कर रहे हो? अच्छा, यू आर ऑन ये कैसे किया मैक. ये कैसे अरे ही किया? इज ऑन मैक, ही इज ऑन मैक, तो हाँ, उसमें रिएक्शंस बट ऑन, कैसे मैक रिएक्शंस ऑन कर दे उसमें. कैसे करते हैं? मतलब उसका जो कैमरा वाला आइकन है ना, उसको प्रेस करो, रिएक्शंस ऑन कर दे. उसमें तू ऐसे करेगा तो बलून्स आते हैं, वो सब है. ये मेरे ऑफिस के कैसे लैपटॉप में भी होता है. जस्ट स्विच ऑन रिएक्शंस ना, यार? कैमरा का आइकन क्लिक कर और नीचे टैप रिएक्शंस कर आएगा. रखा है मैंने, ड्रॉप. हाँ करा मैंने। चल टेक सपोर्ट बाद में करते हैं अभी. हाँ, टेक सपोर्ट क्यों बाद नहीं में हो करते रहा है हैं. ये? But आई एम डूइंग द सनी देओल रिएक्शन ब्रो, कम ऑन. ऐसे कर, क्यों नहीं हो रहा है ये? ऐसे कर, देख हुआ ना. तो हर चीज में नहीं है, मतलब ऐसे कर या फिर या ऐसे कर, ऐसे कर. अभी हार्ट बना, वैलेंटाइंस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल. हाँ देखो आया ना, वही रिएक्शंस भाई है. चले दिस इज मैक बेसिकली. मैक के मेरे ऑफिस के लैपटॉप में भी होता है. ऑफिस के लैपटॉप में मैं कभी कभी मीटिंग में बैठ के मैं ऐसे 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 भी बैठ जाता हूँ तो ऐसे हार्ट निकलने लगता है. मैं बोला ये क्या हो रहा है, राइट? तो मतलब एनीवे, बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन. डिस्ट्रैक्ट तो हम लोग इतनी आसानी से हो जाते हैं ना, जिसका sorry, कोई. I didn't mean to. I was very happy because I was like, you said Barcelona is not doing well. I'm like, yes. बट Sorry. प्रणय तो चलो, प्रणय तो भाग गया. चल परम से पूछते हैं. परम, बार्सिलोना के लिए कितना, क्यों, बिकॉज इन सम वे मे बी यू कैन रिलेट टू देयर सिचुएशन, उनका भी Yeah. फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है. बार्सिलोना Yeah. के लिए चैंपियंस लीग कितना जरूरी है अभी? मतलब चल जीतना नहीं, बट मे बी एडवांसिंग टू अ रिस्पेक्टेबल. चल प्रणय Sorry. वापस आ गया तो प्रणय से पहले पूछ लेते हैं. हाँ जी, प्रणय, तेरे क्या? हिसाब से सॉरी, आई मिस्ड बार्सिलोना के आउट. लिए, द क्वेश्चन इज दैट बार्सिलोना का ला लीगा तो मुश्किल है, ठीक है. कप कंपटीशन में पहले भी बाहर हो गए वो लोग, है ना. चैंपियंस लीग जावी ने बोल दिया है कि अब तो मैं छोड़ रहा हूं, तो जावी को सैक करने वाला क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है. तेरे को लग रहा है कि क्या कि बार्सिलोना का सीजन थोड़ा इट इज ड्रिफ्टिंग, और डू यू थिंक कि चैंपियंस लीग को बहुत सीरियसली लेंगे वो लोग? आई मीन चैंपियंस लीग को टफ, सॉरी, एक सेकंड, माय डैड जस्ट मैसेज. ओके, चैंपियंस लीग, एक सेकंड देना मेरे को निधि भैया. आराम से तू 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 ले टाइम. प्रणय, सेम क्वेश्चन ब्रो. सॉरी परम. So yeah, I mean, as you said कि सीजन तो बहुत मिक्स्ड बैग रहा है. Like obviously ये लीग में जितनी इनकंसिस्टेंसीज और जितने डिफेंसिव एरर्स आप देखते हो, इवन फ्रॉम कुंडे अराओ एंड एवरीवन, आई मीन पैरामाउंट तो है. एंड आई फील समवेयर थोड़ा मोटिवेशन होगा टू ट्राई टू गो ऑल द वे, बिकॉज दे नो दैट Xavi is going to leave at the end of the season, and maybe they'll try to put in that extra mile to make him leave on a high. I don't think they can win the league from here. I do not see Real Madrid fumbling the bag. But yeah, I mean, Champions League जीतना तो paramount है. अभी obviously अगर आप ड्रॉ भी देखोगे उनका अगेंस्ट नापोली, both it's funnily enough if you compare both the clubs, it's like about who's less worse off. Obviously it is Barcelona in my opinion again, at least with on pitch problems in comparison to financial. तो I think again इनके financial problems तो कहीं anytime soon जाने नहीं वाले. So I mean, what's the best they can do? Try to put in the best in every whatever European competition they're playing and earn whatever money they can. And जो नया फॉर्मेट अगले सीजन से चालू होने वाला है, you never know उसमें क्या सक्सेस रेट होगी उनकी, because a lot of clubs are now improving their own house. And again, so I feel this is a decent chance for them to do it. Again, I feel कि वो लोग नापोली को they will get past them and उसके बाद again फिर से drop है, because I feel कि somewhere down the line उनको वो maybe they will try to give their best. I don't think they are contender, like again I don't want to disrespect them or anything, but I don't think like they're either like top 3 or something to win it. But again outside chance तो है ऐसा लग रहा है थोड़ा, but yeah, तो वही. Really? प्रणय क्या बोलता है, आउटसाइड चांस बारसा? और यू थिंक सीजन थोड़ा ड्रिफ्ट कर रहा है उनका? नहीं, मेरे हिसाब से देख, आई थिंक चैंपियंस लीग एंड ला लीगा शुड बी नाउ टेकन असाइड मेरे हिसाब से, बिकॉज चैंपियंस लीग को नाउ जावी बार्सिलोना शुड टेक इट मोर सीरियसली,
they will probably, because ये Yep, this would have been I like his agree. only, you know, एक redemption वाला होता है कि यार तुम्हें पता है कि तुम एक जगह पे तो नहीं कर पाओगे कुछ, तो you focus on one thing and you Yeah. probably go and aim for that. वही. I think अब Napoli भी अच्छा नहीं कर रही, तो I'll just say one game at a time कि अब Napoli भी I think they're 10th in I think हालत league, बहुत right? I खराब है. think 9th बहुत खराब है उनकी लीग में हालत. बट सी चैंपियंस लीग में लाइक जब जिस टाइम पे मैंने मतलब जब से मैं फुटबॉल देख रहा हूँ, चैंपियंस लीग इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. You can see Chelsea True. also winning. I have seen Chelsea winning UCL with Roberto Di Matteo, man, where nobody would have ever thought कि you know वो भी हो सकता है, but it has been done. So again, I would not write off Barcelona at all. Yeah. Given with what you know, we all know that Xavi is a fantastic manager. मतलब आप चाहे जितना भी उसको बोल लो, आप form, and I think ये चीज मैंने शायद पहले भी एड्रेस करी है कि I think Barcelona has also struggled with a lot of injury issues. But the same thing is also Real Madrid, but एक वो mentality वाला मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि Real Madrid even अगर वो अपनी academy team भी उतार दे तो भी उन्हें पता है that they are playing for, you know, they somehow get the win. That is where a very small difference I think Real Madrid और Barcelona कैंपियन में आप कर सकते हैं. But Xavi के साथ particularly अगर मैं बात करूँ, I think he has been very unlucky also. Not just to blame on कि कुछ आप चीजों में आप बोल सकते हो कि हाँ कुछ डिसीजन शायद जावी लॉर्ड जावी जावी को तो बहुत अनफेयरली ट्रीट किया मेरे हिसाब से. जावी हैज बीन ट्रीटेड अनफेयरली अकॉर्डिंग टू मी. प्लस आई थिंक फुटबॉलिंग वाइज भी अगर आप देखो तो अब कुछ लोग ओपिनियन पे अग्री करेंगे नहीं करेंगे बिकॉज इट्स फुटबॉल एट द एंड ऑफ द डे, बट यू नो स्ट्राइकर इश्यूज, व्हेन यू नो दैट प्रॉब्ली आपके पास एक स्ट्राइकर नहीं है जो उतना जो अपनी प्राइम पास कर चुका है, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम लेवेंडोस्की, he's been you know, my brother's favorite manager, everything, all that, but कुछ decisions हैं जो शायद if he would have taken right, maybe they would have done well. But I think Barcelona still has a very clear I would say clear path if we take just for if we approach one game at a time, और उनका group wise भी अगर आप देखो आगे जब होगा तो I think they can go till probably semi-final. मेरे को ऐसा लगता है they would be favorites till the semi-final. भाई semi-final बोल पर. Sorry, go ahead. I'll add later. It's okay. नहीं, I was only saying कि semi-final पहुंच गया तब तो कुछ भी हो सकता है. Semi-final के बाद तो you need you know a good 180 minutes, one in the final and you know one in one of the legs, you know, और बाकी नॉर्मल सा मतलब एवरेज भी करके आप निकाल सकते हो. बट सॉरी परम, यू सेइंग समथिंग. नहीं, मैं सिर्फ एक छोटी चीज ऐड करना चाहता. थिंग इज व्हेन आई लुक एट दैट, वो जब मैं बारसा की स्क्वाड देखता हूं, व्हाटएवर आई वॉच दिस सीजन, वो जो आई थिंक वेयर दे स्ट्रगल द मोस्ट, जहां आपने बोला कि शावी को थोड़ा अनफेयर क्रिटिसिज्म मिलता है, प्रणय सेड कि वो जो प्लेयर प्रोफाइल्स अगर आप देखोगे they are not fully suited to what they want to play जब वो 3 to 5 में ट्रांजिशन करते हैं, और when they lose the ball, most of the goals अगर आप देखोगे तो have come from quick transition from opponents, and Kunde और Araujo have been beaten on in 1v1 situations way too many times. तो अगर I mean I can see them having, again if they get past Napoli, I can see them having a chance, but I just feel कि अगर if they have this bad luck of drawing any good team remaining after that, then it's quite, you know, like difficult, because वो player profiles थोड़े limited है. like जब से Busquets गया, I don't think he has been replaced optimally. आप player नाम throw in कर सकते हो जिसको आपको throw in करना है. I'm not taking away anything from Gundogan, by the way, don't get me wrong, but I feel कि जब वो defensive phase की बात आती है, Gundogan थोड़े occasions पे easily bypass हो जाता है than a Busquets would have. That's just my observation. But so, और ऑब्वियसली जैसे प्रणय ने बोला, उनकी जो इंजरी लिस्ट है ऊपर से, आई मीन इट्स जस्ट अ बिट टू एक्सटेंसिव. एज ही सेड कि जो रियल मैड्रिड कर सकती है, नॉट एवरी क्लब कैन डू. सो I feel where they take the most hit, apart from whatever you want to question Xavi on, is the certain profiles they have. Yeah, exactly. I think we don't have a proper CDM. I think that's what I'm basically highlighting. So I think that's where they will take a hit if they especially come against a team that is very good on the break or whatever, good at, you know, winning first ball, second ball, tactically speaking. So I think that's the main thing that will hold them back more than anything. More than मैं बस एक चीज और क्लैरिफाई. हाँ बोलो. हाँ पर भाई फिनिश कर लो. No, I'm done. नहीं, आप बोलिए.
मैं बस एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे कि व्हेन आई से सेमीफाइनल, तो आई एम जस्ट सेइंग, देखो आप राउंड ऑफ 16 में हो, ठीक है। नापोली, मैं आई वुड probably say it will be a 50-50 game because Napoli is like Pakistan, मतलब unpredictable है यार. On their day they will even, you know, they might score 4 goals or something. तो unpredictable है, but I would say कि ठीक है, अगर आप just as a game देखो और just as फॉर्म, तो खैर बारसा की भी रिसेंटली उतनी अच्छी नहीं रही है, बट आई वुड जस्ट से कि फेवरेट वाइज अगर आप बारसा को लेते हो इसमें, ठीक है, देन यू आर लेफ्ट विद जस्ट 8 टीम्स. एंड ठीक है, कुछ फिक्चर्स अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रियल सोसिएडाड वर्सेस पीएसजी, ठीक है, एक विनर आएगा. देन यू हैव एटलेटिको इंटर, यू नो, मे बी वन फिक्चर, वन विनर कमिंग आउट, पोर्टो आर्सेनल, डॉर्टमंड पीएसवी. तो मैं सेमीफाइनल बस उस स्टेज पे लेके जा रहा हूँ कि अगर आप रियल मैड्रिड, मैन सिटी या बायर्न जैसी टीम्स को अगर आप नहीं फेस कर रहे हो, बिकॉज अभी तो आप 16 टीम देख रहे हो, बट सबके साथ थोड़ा ना खेलना है आपको तो सिर्फ एक ही टीम के अगेंस्ट खेलना है ना, जहाँ पे आपका पाथ क्लियर हो सकता है. सो आई एम जस्ट सेइंग कि इवन if they win the Napoli game, they still have a chance. And if सेमीफाइनल तक अगर मैं उन्हें फैंसी कर रहा हूँ, तो इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज दे, अगर बहुत ही खराब लक हुआ तब तो एक अलग बात है कि यार तुम्हें बायर्न मिल जाती है, बट देयर विल बी माइट बी चांस कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो यू कैन गेट आर्सेनल, पोर्टो में से कोई एक, या डॉर्टमंड पीएसवी में से कोई एक आपको मिल सकती है, पीएसजी सोसिएडाड में से आपको कोई एक मिल सकती है. सो जस्ट ऑन दैट वे आई प्रॉब्ली फैंसी ऑन प्रॉब्ली देयर सेमीफाइनल स्टेज. और बस एक चीज मैं भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट रियली highlighting them in the bracket of कि टॉप विनर कंटेंडर लिस्ट और ये सब में. आई जस्ट फील कि अगर थोड़ा कुछ फेवर कर जाए पोस्ट द नेपोली राउंड, which what I am expecting them to win, then is the only time I'm really giving them a chance, because otherwise मुझे नहीं लगता है they really have the squad, again player profiles, to go through all the way, especially if they get even again like even if let's say they get Inter or Atleti, then it's really tough. Whichever one of the teams goes through, it's just a bit too difficult, I feel, with the current state of their squad. Nothing else. जीतू भाई, इसके बाद एक और टीम एंड देन वी विल टेक योर मैचअप्स एंड देन वी विल, बहुत लंबा नहीं करेंगे. बार्सिलोना. See, there are few problems with Barcelona. One is that they have thrown a lot of their young kids into the first team, which is great. It has worked in the past. Sometimes those players have turned out to be world-class players. Currently, their crop is not that great. All right. Yeah. Now, I still like Yamal because I think he still has a lot of spark, a lot of, he can get the goal. But defensively, with Araujo and Koundé, they are lacking at the moment. And I don't know if you've noticed this, that with Koundé especially, he's turning up to games in a very, like, okay, this is again me being, unnecessary intrusive, but he turns up to game in this typical NBA style, drip guy. He doesn't look like he's in the game, right? The second thing Koundé. is Javi's morale. Koundé. Javi's morale is not that good right now. Like the way even his exit is there, the problems with sort of Deco, the lost in translation stuff happening, right? Behind the scenes, Laporta is getting fired. Two of their, I would say, top 5 players, two of the best players, Cancelo and Joao Felix, are loanies. They want to make it permanent. पर कैसे करेंगे वो पता नहीं. उसका वो जो लीवर लिया था उसका पैसा भी तेरा. There are a lot of problems in the back end which are affecting the team, and they are not able to, like, if you look at their team, they have some kids, some really over the hill, and Gundogan and Frankie. So you don't have a sort of, it's looking like a very disorganized Barca. Barca, generally the good Barca teams of the cohesiveness in them. Chalo, two great world-class players from outside, La Masia के बच्चे जो मतलब top level के बच्चे, एक अच्छा गोलकीपर. ये गोलकीपर का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इनाकी पेनिया हैज बीन टेरिबल फॉर देम. अभी मैच अभी वापस आया, पर we'll have to see how he comes back and उसका कैसा होता है. So if they go a goal down, वो rebound ability थोड़ी कम है. So, I mean, if they can control the game and win the game 2-0, 3-0, great. They are fantastic that way. But if they get a goal down, वो rebound ability थोड़ी कम है. And that is the reason they are below Girona at this point. जहाँ पे Girona और Barca का आप historically आप compare नहीं करते. So that is the thing. I personally, this is my opinion, I hope they fucking lose to Napoli. I hope Napoli wins, and I hope Maradona comes and says, yes, Jai Mata Di, hum log jeet gaye. But so I don't want them to go. But yes, if they come,
like I think Pranay bhai said कि वो Javi का last season है, so they might want to push for it. I don't think Javi has that. Apart from the kids, he doesn't have that sort of love or that कि like for Carlo, if Carlo was leaving, you could say. If Pep was leaving, you could say, हाँ Pep जा रहा है तो हम इसके लिए जीतेंगे. Javi does not. Javi इतना I don't know if you've noticed La Liga games. Javi gets a yellow card ever so often. उसको कार्ड मिल जाता है because he is very aggressive. He doesn't have that calm demeanor to control these players that play under him. He doesn't command that respect. So I would love him to lose, but yeah, I mean, I hope they don't go to the semi-finals. I don't want to see them. मेरे को चाहिए वो निकले, थोड़ा फील्ड थोड़ा क्लियर हो, दूरी बनी रहे हमारे और उनके बीच में. But so for those reasons, I don't think they will go really far. But you never know. Match could come back. Lewandowski could find his form again, and it could be. But I don't see right now because the morale is very low. Back end below है, बच्चे खेल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है. That is all my 2 points. शशांक भाई, आपका सुपर चैट में नहीं लूंगा बिकॉज इट विल क्रिएट अननेसेसरी का कंट्रोवर्सी, सो मैं नहीं लेने वाला हूँ आपका सुपर चैट्स, बट सॉरी. एक और टीम के बारे में, एंड प्रणय तेरे से स्टार्ट करते हैं यार. एक और टीम जो सब लोग बोलते हैं कि यार मे बी चांस है, एंड आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट, इज आर्सेनल. मतलब तेरे को लगता है maybe Arteta just after 140 years finally Arsenal को एक यूरोपियन ट्रॉफी जिता दे? तेरे को लगता है ऐसा हो सकता है? मतलब मैं नहीं, सोचा नहीं इस बारे में. मैं सोच तू सोच. Here's my मैं कभी सोचा नहीं इस बारे में. वो क्वेश्चन मेरा कहाँ से आ रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ. देख मेरा पॉइंट ये है. देख, पोर्टो के साथ उनका मैच, पोर्टो को तो हरा देंगे वो लोग, ठीक है, मोस्ट लाइकली. मतलब यहाँ पे लाइकलीहुड की बात हो रही है, ठीक है. पोर्टो को तो हरा देंगे यहाँ पे वो लोग. पोर्टो के बाद उनको मान ले कि कोई फेवरेबल ड्रॉ मिल जाता है, मान ले कि सिटी नहीं मिलती उनको. बाय द वे, बहुत लोग पूछ रहे हैं परम के यूट्यूब चैनल का नाम. परम यूट्यूब चैनल इज नॉट एक्टिव अनफॉर्चुनेटली, बट I'll put it in the comment section कल. ठीक है, पोर्टो को तो हरा देंगे वो लोग. उसके बाद डिपेंड्स ऑन ड्रॉज. मेरे हिसाब से एक आर्सेनल को एक टीम बहुत पीटती थी जब उनका मतलब करीब 10 साल पहले, दैट वाज बायर्न म्यूनिख. अभी मैं बायर्न म्यूनिख का डिफेंस देखता हूँ और मैं आर्सेनल का डिफेंस देखता हूँ ना, आर्सेनल का डिफेंस गिव्स मी मोर कॉन्फिडेंस, राइट. बायर्न म्यूनिख शेकी लगती है. मतलब सोचो अगर उनको नापोली बार्सा में से मिल जाए, वहां पे भी मतलब देखिए एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स ये टीम्स के पास ज्यादा है. आई जस्ट फील, मान लो उनको पीएसवी वाला मिल गया तो सेमीफाइनल में आ गए, और सेमीफाइनल में आने के बाद तो कुछ भी हो सकता है. दिस इज वेयर माय क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम. अभी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिला तेरे को मेरे क्वेश्चन का. मैं एब्सोल्यूट चांस नहीं get it. See, if I say this in terms of like I'll just compare it with my club, ठीक है. Mentality wise to build that, मतलब जैसे अब मैं closest example मैं किस चीज का ले रहा हूँ, where I'm coming from is last season, ठीक है. Arsenal were in the driving seat, they were clear favorites, but the squad was very I would say raw and young, ठीक है, and fair to them. मतलब ठीक है यार, मतलब आप the squad was actually very young. मतलब यार साका वाका, मतलब अब पिछले सीजन के बाद इस सीजन में उन्होंने काफी कुछ सीखा, and that's why they look good. मैं बस इस चीज को उसी सेम I would just put it in the same parameters of City. I think just because Guardiola really got मतलब पिछले 3-4 साल से जब वो ट्राई करा, उसके बाद हमें पिछले साल हम जीते, ठीक है, चैंपियंस लीग. सो आई जस्ट फील ऑन द सेम पैरामीटर्स. आई थिंक Arsenal, they can probably go till semi-finals or even go to the finals. They might even win. But I'm just saying, if I put it in the same parameters, I think Arsenal is too early. Maybe because they need to have अभी उनको 1-2 साल और खेलना पड़ेगा चैंपियंस लीग, प्लेयर्स को भी उस मेंटालिटी को करने के लिए. जैसे बाकी क्लब्स, आपको पता है कुछ क्लब्स जो
क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचते ही हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द मेंटालिटी दैट दे हैव, बिकॉज ऑफ द लास्ट 3-4 सीजन से जब आप खेल रहे हो, सेम विद सिटी, आप एक फाइनल हारोगे, उसके बाद एक फाइनल आप उसके बाद आप जीत रहे हो. सो आई थिंक सिंस बिकॉज आर्टेटा कम्स फ्रॉम द सेम, मतलब है तो मतलब पेप के उसमें ही, तो इफ आई जस्ट पुट इट इन द सेम पैरामीटर्स टू सिटी, देन आई वुड प्रॉब्ली से कि उसको शायद अभी थोड़ा सा टाइम है चैंपियंस लीग को फैंसी करना. बट इन फुटबॉल अगेन वी नेवर नो मैन, लाइक वी नेवर नो, वी डू नॉट नो एनीथिंग कि भाई आगे क्या हो जाए. सो आई होप दैट आंसर्स, आपको वो सवाल का आंसर मिले उस चीज से. जीतू भाई, I know Yeah, you don't watch Arsenal as much. no, I have been watching because they're my only hope against Pranay Bhai. So that is why. That's your only hope. Yeah, against Pranay Bhai people. So like I watch them. I watch all Pep Guardiola football. So anyway, but I agree with him 100%. एक टीम है जो फिलहाल टॉप पे है टेबल के, रेड में खेलती है वो भी. I loved जीतू भाई man. What a boss move. Menace in the Monk पे आके you completely ignored Liverpool. Man chose violence. लिवरपूल भी है. I mean, I have a lot of respect for my Liverpool brother. अभी तो यार मेरे को पॉलिटिशियन मत बना. पॉइंट ये है कि आर्सेनल नहीं जीतने वाली, ठीक है. आर्सेनल को थोड़ा एटलीस्ट 2-3 साल रगड़ना पड़ेगा उनके प्लेयर्स को, वो उस लेवल पे आके करना पड़ेगा. बिकॉज क्या होता है, बायर्न हो गया, सिटी हो गया, रियल हो गया, एक टाइम पे बार्सा हुआ, जब वो सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल में नॉकआउट सीरीज में आती है. अच्छा, you were talking about the Champions League. हाँ, like what you talk about? नहीं, हम लोग सबको लगा you're talking about the Premier League कि वही. हाँ, for the Premier League, of course for the Premier League, but I'm coming back. He meant that. I meant कि for the Premier League there is only Arsenal. Sorry, but Arsenal, I need some to at least take a few points off. But speaking of Arsenal, the Champions League, they're nowhere close. हंस क्यों रहा है? Don't track back जीतू भाई, don't track back. कर रहा हूँ. Either that was a boss move, or either that was a boss move. No. Or you're tracking back. नहीं, I'm not tracking back. I'm just moving forward right now. कि मैंने इग्नोर किया लिवरपूल को, but I have love and respect for my Liverpool brother. हाँ, तो coming back to the point कि Arsenal has to lose a few semi-finals, lose a few quarter finals, तब जाके उनका एक pedigree बनता है, because all these clubs that come in the knockout stages come with a different mentality कि हमको जीतना है. हम भले वीकेंड पे हारे हो, भले अगले वीकेंड पे हारेंगे, पर ये मैच जीतना है. जो शायद आर्सेनल, आई एम सॉरी टू से दिस, लास्ट ईयर जितना डिसअपॉइंट किया है इन टर्म्स ऑफ आप यू, एंड इट हैपेंस, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि आई मीन व्हाट कैन आई से, आई मीन हो गया, बट दे शोड देयर लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग able to handle pressure. वो जब तक वो नहीं सीखेंगे, वो young squad है, अच्छी squad है, talented squad है, जो भी आप बोलो, but you have to, I mean, again, using an example of even Liverpool, right? Liverpool also, when Jurgen came, 4 years later, they won the league, right? And they kept trying, and then, we beat them, and then they won the Champions League. But वो तुमको करना ही पड़ता है, तुमको. Yeah, you have to do it. It has to be done, and right now they don't have the squad experience in the Champions League to come out. मेरे को लग रहा है आप लोग सब लोग बहुत फेंस पे बैठे हुए हो. हाँ, क्या करने हैं? मेरे को ऑनेस्टली लग रहा है ना, आप लोग बहुत फेंस पे बैठे हुए हो. And last minute we have, as Real Madrid do, we have a 2-on-1 versus situation with Denuka entering the remontada, right? But Denuka's internet is like Real Madrid का medical team, so we'll be on standby, और our medical team. अरे भाई जीतू भाई, ये तो मैंने आपको बताना ही भूल गया. मैंने अभी अपने एक वीडियो में बोल दिया कि लिवरपूल का मेडिकल टीम मेरे को लगता है होम्योपैथी के डॉक्टर्स हैं. भाई पब्लिक होम्योपैथिक डॉक्टर्स बुरा ऑफेंड हो गए, मतलब कि निधि हैज डिसरेस्पेक्टेड इंडियन मेडिसिन बाय सेइंग होम्योपैथी खराब है. पहला तो होम्योपैथिक इज नॉट इंडियन, इट्स जर्मन. Yeah, exactly. Yeah, it's German. और मतलब
और दूसरा कि भाई मतलब होम्योपैथिक डॉक्टर ऑफेंड होने लग गए, तो मतलब क्या बोलूं अभी, मतलब पीट, खैर ठीक है, पीट भी देंगे तो मैं असली डॉक्टर से इलाज करा लूंगा, Yeah, लेकिन exactly. कोई right, कोई I, I बट don't understand. Like, you can't. Can you not make a? Can you not make any comparison anymore? Like, can you not just say like नहीं off the नहीं, cuff anything? आई थिंक कुछ भी. आई थिंक आई थिंक वी आर एट अ पॉइंट वेयर अगर आपने विजय दहिया के ऊपर जोक मारा तो एक विजय दहिया फैन क्लब कहीं ना कहीं होगा जिनको बुरा लग सकता है। we are we are at that point Oh on the God. internet, but परम क्या बोलता है, आर्सेनल देखा है तूने, Yeah, लेट्स बी yeah, ऑनेस्ट, yeah. यू थिंक दे हैव अ चांस? नहीं, आई थिंक जो प्रणय और जीतू भाई ने बोला, आई थिंक मेरे थॉट्स भी वही लाइन पे कि आई थिंक दे हैव द, आई थिंक प्रोफाइल वाइज अगर आप स्क्वाड देखोगे और क्वालिटेटिवली देखोगे वो है, एज यू पॉइंटेड आउट अर्लियर कि द डिफेंस इज आल्सो प्रीटी सॉलिड, एंड जो राइस का एडिशन है टीम में, दैट हैज हेल्प्ड इवन मोर. आई मीन सलीबा एंड गाब्रियल आर आल्सो स्कोरिंग अ लॉट ऑफ गोल्स हियर एंड देयर, सो आई थिंक प्रोफाइल वाइज इफ आई थोड़ा बारसा के साथ just off the top comparison करूँ, I think in this case you have the profile and the squad that you need, barring a few injuries here and there, but I think वो inexperience is where they will suffer. I think जितना लोग इजी बोल रहे हैं पोर्टो गेम होगा उतना है नहीं, बिकॉज लास्ट सीजन हमने भी पोर्टो को फेस किया था एंड इट वाज एनीथिंग बट इजी. बहुत डिफेंसिवली टफ टीम है, एंड आई थिंक इधर भी दिस विल बी वन बिग टेस्ट. अगर ये वो सरपास कर ले देन थोड़ा और चांस दे सकते हैं, बट आई डोंट थिंक ये सीजन वो लोग जीतेंगे. दिस विल प्रिपेयर देम फॉर द नेक्स्ट सीजन और टू आई फील, बट दिस सीजन आई थिंक फॉर देम वो इम्पोर्टेंट है कि इधर से वो प्रॉपर एक्सपीरियंस उठा ले और मिनिमम डिपेंडिंग ऑन द ड्रॉ अगेन क्वार्टर फाइनल्स तक तो पहुंचे. While I feel Porto will be tough, but I think obviously Arsenal have the edge over here. क्या यार धेनुका तू नहीं थी, जीतू भाई इधर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं. एनीवे, डी क्या बोलती है, रियल मैड्रिड फेवरेट्स और आर यू गोइंग टू डाउनप्ले देम लाइक एवरी ईयर? No. I think we should beat Leipzig, man. Come on. No. I'm not आई एम सेइंग downplaying. फेवरेट्स और तू लाइप्जिग. Huh? आई एम To सेइंग win फेवरेट्स or फॉर द this टाइटल. favorites for the तेरे को क्या title? लगता है लाइप्जिग के अगेंस्ट में बोलूंगा अरे लाइप्जिग को हरा पाओगे कि नहीं तुम लोग? I have no idea, man. I just came on the live and I have no idea what has been discussed. I was trying to go through the comments. कौन है ये लड़की? Hi, I'm Denuka. I'm from Bombay Penya, and yeah, I'm a Madridista. Long time supporter of this channel. Please subscribe if you haven't. और क्या? हाँ. कुछ so favorites for the title, We'll give definitely you. one of the favorites. Reigning champions you can't exclude, man. Man City are right up there, so you can't just be like हाँ हम लोग ही जीतेंगे. So one of the We'll favorites for give you. sure. हाँ, we'll give you some time to settle in, and एक क्वेश्चन लेते हैं, and I'll come to परम with this. इसके बारे में बहुत बात हो रही है. First of all, गुरप्रीत यार, सॉरी तेरा क्वेश्चन एंड में लिया बिकॉज वहां पे आ रहे हैं भाई. ये मैच जो है ना, दिस इज लाइक एलियन वर्सेस प्रेडेटर. आई एम रियली हाइप्ड फॉर दिस गेम. मेरे को ये मैच देखना ही है. मतलब मैं एकदम ऐसा पॉपकॉर्न लेके बैठने वाला हूँ. ये मैच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. व्हाट इज योर फीलिंग? बिकॉज यार जब लोग बोल रहे हैं ना, आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड का रीबिल्ड या उनका जो मतलब रीब्रांडिंग जो बोलना है बोलो, दैट हैज बीन ब्रिलियंट यार. उसके बारे में उतनी बात नहीं हो रही है, एंड आई थिंक they've also been brilliant. क्या बोलता है ये मैच में? हाँ, तो आई मीन तो ये जब ड्रॉ हुआ तो ऑब्वियसली इंस्टेंट थॉट था मेरे लिए दिस इज आउटराइट 50-50, बिकॉज अगर आप इंटर का रिकॉर्ड देखोगे जनरली अगेंस्ट स्पेनिश साइड्स इट्स नॉट दैट फेवरेबल. तो एंड स्टाइलिस्टिकली राइट ऑफ द बैट एटलेटिको इज one of the worst draws we could have gone. Not that I feel we are better than them, but I just feel that it's not always about quality. If you can set up a certain way, or agar you can delay a game a certain way, then you can always have it your way. Jaise Real Sociedad made us play. They made us struggle in the group stage. In both the legs, they were the better side. I have to admit it. So I think, and I feel Atleti are better than them. So obviously, bada news hai jo Morata won't be there for the game, but at the same time, we also have our own issue. Acerbi won't be there. स्टाइलिस्टिकली यस ये बहुत टफ होने वाला है. मतलब ग्रियजमैन ने भी खुद कमेंट किया था कि ये इधर इंटरेस्टिंग गेम होगा बहुत या फिर बहुत बोरिंग होगा टैक्टिकली, बिकॉज बोथ टीम्स लव टू डिफेंड फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट अटैक. एंड
knowing Atleti's away record this season, अगर आप follow करोगे, they have been below average away games. I mean, उस दिन they lost to Sevilla as well, and Sevilla का season आप अगर देखोगे, they have not had the best of season. So अगर हम लोग home game में अगर 1-0 भी, if we can't get a win at home, then I would be a bit nervous going into the away leg. But अगर again Atleti, I feel, have more issues than Inter do, tactically speaking. Again, I don't want to sound arrogant or anything, but right now where we are, the level at which we are performing, हमारे team में there are very minimum problems tactically, morale wise, anything. Again, we are performing at a very high level. So are Atleti, but I feel उनके डिफेंस और मिडफील्ड में जो ट्रांजिशन होता है, बहुत इश्यूज है उसमें. They concede a lot of goals when they leave a lot of gaps. So I feel that is where we can take them, and a player like Thuram and Lautaro, those were players that can exploit those gaps. I feel that is where we can get them. और अगर if you notice, अगर आप एथलेटिक के डिफेंडर्स को आइसोलेट करोगे, they are individually not that good. Witzel in 2024 as a center back is only a temporary fix, to be honest. So, and I was having this chat with a friend who is an Atletico Madrid fan. He wasn't too happy about the draw. वो बोल रहा था कि I agree it's 50-50, but with the defense we have, I don't feel a bit too optimistic. But again, if Simeone puts out a master plan in the first leg, then you can't rule it out. So मैं तो 50-50 बैठा हूँ, because again, there's a lot going on here. Stylistically, as I will repeat, कि one of the worst draws we could have got. Personally, I don't mind कोई भी draw में मिले, चाहे वो Bayern हो या City हो, I really don't mind. But to be very objective, stylistically, this is definitely the worst draw Inter could have got. I mean, अगर आप इंटर कम्युनिटी में जाके देखोगे, वी वर मोर, अगेन दिस इज नॉट डिसरिस्पेक्ट, बट हमारी फैन बेस वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले बार्सिलोना बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट वी कुड बीट देम. Again, this is not to sound arrogant or to disrespect them, but the fact of the matter is, out there we are very operating at a very high level. So we were actually like बोल रहे थे कि बारसा मिला तो इट्स लाइक श्योर शॉट हम लोग मोस्टली जाएंगे थ्रू, बट विद एटलेटी आई कांट से दैट. It is very 50-50. You still अभी if you notice, Depay has come back into form out of nowhere. So ये टफ तो होगा. So I am optimistic. I feel we will win, but and then mentality भी है. देखो, we are out of the Copa Italia. थोड़ा लीग में जो गैप है, I think थोड़ा जगल कर सकते हैं स्क्वाड के साथ, और I think थोड़ा पुश कर सकते हैं UCL के लिए, because the players want it. The last season's UCL final defeat awoke something in them. That is why we are performing the way we are. Last season there was a chance to win it when we played, but obviously certain players missed certain shots, so you can't really say anything. But तो हाँ, हम लोग generally optimistic है, but cautiously, but more of it, not overconfident or anything. Cautiously मतलब medical team भी ready रखना भाई अपनी. प्रणय, ये दिस इज मतलब मैच तो जबरदस्त है, और परम ने मस्त समराइज किया. दिस इज द मैच वेयर आई थिंक तेरे को सबसे ज्यादा मीम्स मिलने वाले हैं. मेरे को ऐसा फीलिंग आने वाला है, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये मैच बहुत ड्रामेटिक होने वाला है. ये खूब ड्रामा होगा इसमें, मारपीट होगी भाई. मतलब हमने तो, मुझे एज लाइक एथलेटिको को जिसको हमने फेस करा है भाई, और जितनी लड़ाइयां मैंने देखी भाई, चाहे वो सैविच ने जब बाल खींच लिए थे ग्रिलिश के और वो सब भाई, इंटरेस्ट. मैं तो चाहता था भाई, यू नो लाइक इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सिटी अगर इंटर को मिलती, तो इट्स नॉट अबाउट द प्ले एट ऑल. इट्स अबाउट कि भाई प्लेयर बचे ही नहीं होंगे मेरे उसके बाद, चाहे हम कैंपेन अगर हम मैच जीत जाते हैं, बट प्रीमियर लीग में डी ब्रुयना इंजर्ड, हालैंड का कुछ ना कुछ कर दिया, आधी टीम स्ट्रेचर पे जा रही है मेरी. तो आई डोंट वांट टू फेस देम जस्ट फॉर द फैक्ट दैट इट्स एथलेटिको मैड्रिड. मेरे को ये नहीं कि मेरे को हम मैच जीत सकते हैं, बट इट इज जस्ट अबाउट द फैक्ट कि भाई मुझे अपने प्लेयर्स आगे वाले कॉम्पिटिशन में भी रेडी करने हैं. आधों को येलो कार्ड मिल गया होगा तो वो एक और सर में दर्द की भाई, राउंड ऑफ 16 में ही तुम्हारी 10 तुम्हारे खुद के प्लेयर्स येलो कार्ड लेके बैठे हुए हैं. अब नेक्स्ट में तुम किसी और टीम को फेस कर रहे हो, तो वहां पे एक और चैलेंज कि भाई एक और येलो कार्ड मिल गया तो सस्पेंशन हो जाएगा एक गेम का. तो आई एम जस्ट हैप्पी that we haven't got Atletico Madrid just because they are Atletico Madrid. लेकिन थोड़ा So उनका चेंज हुआ है. I had one. I'll come to D. Yes, exactly. I'll come to D only. तुम्हारे तो पड़ोसी हैं, बताओ. हमारी पड़ोसी है, but I was going to talk about the same thing कि about the change in Atletico Madrid this season.
So ये season ना they have also been playing more Yeah. attacking football Yeah. than their usual वही brand of Yeah. defend and defend. So and it also helps कि Griezmann and Morata are in like excellent form, and Morata is a huge miss. Is a huge miss. Okay, मतलब वो, and you could see that because even in the game against Sevilla. What happens is, so earlier because they were more defensively compact also, and also a little like they were defensive minded. Come on, they Simeone has openly said that that's his style of play and that's what he likes, and that other teams don't defend as much or defend well. So but this time it has हमारा been a मर्जी है, very stark change. हमारा मर्जी है, हम नहीं करेगा अटैक. Right. Sorry, continue. हाँ, नहीं, now it's stuck in my head ना अभी. तो अच्छा, हाँ, तो वो तो उनका स्टाइल ये टाइम काफी चेंज हुआ है, एंड they they have always been good on the counter, मतलब attacking on the counter they have always been good, but ये टाइम ज्यादा अटैक कर रहे हैं, which also means कि the other team can also exploit that aspect a lot because they are not able to defend well on transition like पहले वो लोग जैसे करते थे, because they were not as attacking minded. And this season there's a marked change. One other thing though is unke set pieces, like their set piece game is immense now. It is really strong. So that is one place where they can like create havoc. So as I'm saying, and like Morata is going to be a huge miss for Atletico because the kind of form him and Griezmann were in, it was on another level. But I personally think that Inter is stronger this time. So I think if you were to ask me, my bet is more on Inter, especially having seen the last game. It was so easy to rattle them last game with Sevilla. Sevilla is also battling relegation, by the way. तो इसलिए वो लोग थोड़ा ज़्यादा enthused थे वो वाले game में. And because it was a big game for them also, no? Because Atletico is one of the bigger teams, so उन्होंने भी जी जान लगा के like they, and Ramon Sanchez is like their home ground. Sevilla is, they are insane there. So that is all, that also adds up. But I would still feel like it was easy to rattle Atletico that day. बाय द वे भाई लोग, Yeah. 1 घंटे से ऊपर हो गया, मेरे को याद ही नहीं रहा. सबके हैंडल्स लगे हुए हैं, प्रणय टीएफबी और बॉम्बे पेनिया को तो नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम लोग साले वीडियो ही नहीं बनाते हो, तो इनको मत सब्सक्राइब इंस्टाग्राम पे करना. फॉलो करो. हाँ, इंस्टाग्राम पर लिंक डाल ठीक दिया. है, मैं डालता हूँ. इनको हाँ. इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. बाकी हाँ. प्रणय टीएफबी सब्सक्राइब करो यार. आज ही बहुत जबरदस्त व्लॉग आया है रियल मैड्रिड बर्नाब्यू स्टेडियम का. आई वॉच्ड इट, ब्लडी फैंटास्टिक, राइट. सो आज के आज जाके अभी के अभी सब्सक्राइब करो. बट अब थोड़ा खत्म करते हैं, काफी देर से बात कर रहे हैं. एक कुछ सुपर चैट्स हैं वो ले लेते हैं, एंड इन सम टाइम लेट्स एंड दिस. Jitu bhai, the only solution for Barca is to sell a part of the club. Do you think Barca will be able to sell that in the next few years, or it's the only solution? I'll ask this question to Jitu bhai, and then I'll come to Dhenuka. But Pranay, tere fans in the house. Thanks for the contribution, Praveen De Bruyne. My boy Praveen De Bruyne, PDB. क्या बोलते हैं? So, okay, firstly, I want to talk about First coming of back all, to... sorry to interrupt. I would have loved to have some Barcelona representation, but आप लोग जाके उस्मान भाई, सादिक भाई सबको गालियां दे सकते हो. मैंने सबसे पूछा था, कोई किसी के पास टाइम नहीं था. मेरी गलती नहीं है, ठीक है, हमारा गलती नहीं है, हम बुलाया था. Sorry, जीतू भाई बोलिए. Two things I want to compare because we started with this topic. If you look at the ownership model of Inter, for example, okay, I'm only using this example. 60% is with the Suning Chinese group, 30% is with some venture capitalists. The reason Inter is not in trouble is because the Chinese guys Suning firstly is a massive group in China. They have a lot of money. They have invested well. A lot of huge employers, extremely big group, right? A lot of money. So if they are facing a financial crisis, they can just sell part of it to the venture capitalists in Singapore, which is I think some Leo Rock group or something that is the 30%. Lion Rock. Yeah. Similar. Sorry.
So Lion Rock can buy, say, 30% from the Chinese owners, and they can raise funds. Barcelona cannot sell, or Real Madrid cannot sell part of their Exactly. club because the club is owned by the fans. Owned by The fans decide what has to be Fans. done. Yeah. If you are going to Yep. change, and I say this for both Real Madrid and Barcelona, any president that takes it off from a social model to a private equity model, that president will go down in the Exactly. history as the worst president of that club. We are very arrogant, stupidly arrogant, to be like, नहीं ये हमारा क्लब है और हम हमेशा इसको fan owned model ही रखेंगे. It is which is why they cannot sell part of their club, and which is what there is this broadcaster called Media Pro. This guy banda hai, I forgot the guy's name. I'll Google it. He is very close to Laporta, and he was responsible for getting some funds for Laporta. He wants this. He wants that the club should go to a become ownership model that everyone else in Europe has, right? But if Laporta or any president takes a decision to sell part of their club or to privatize part of the club and take it away from 100% fan-owned model, it will be the biggest mistake. It will be the biggest kalank. It will be a bigger kalank than Figo going to Real Madrid. It will not happen, and it should not happen. I mean, I want Barca to raise money on their own and sort of go ahead in that model, because they're the last remaining, with Real Madrid, the last remaining fan-owned club that is doing well. There are a lot of fan-owned clubs, but they're doing well, and so if that happens, it'll be terrible for the club. And people who will come in, they will come in with the primarily this thing only to make money. Because Barca still has the brand value, still has people all around the world who support it, who will buy the merchandise, who will support it. तो वो बंदा सिर्फ पैसे बनाने के लिए आएगा, तो वो नहीं होना चाहिए. और अगर आप बारका फैन हो, you should pray कि वो नहीं हो. Anything else you want to add, Deep? Sorry, I went on a rant. No. That was pretty much it. The question is no, right? You can't. एक तो भाई मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ. बर्गवॉल चोज स्पर्स बिकॉज उसको फर्स्ट टीम. एक तो ट्रांसफर्स के ऊपर क्लब की औकात को ये करना बंद करो. इफ यू रियली थिंक स्पर्स हैव मोर पुलिंग पावर देन बार्सिलोना, देन भाई देन आई फील सॉरी फॉर यू, राइट? ऑनेस्टली, राइट? स्टॉप इवैल्यूएटिंग अ Martin Odegaard rejected Real Madrid went to Arsenal. I mean, right? So मतलब forget बहुत सारी मतलब ट्रांसफर्स के ऊपर बैंटर ठीक है सोशल मीडिया पे वो थोड़ा बहुत, बट इफ यू थिंक कि मतलब इफ यू थिंक कि ट्रांसफर से क्लब की औकात पता चलती है, तो फिर देन यार यू नीड स्लाइटली मोर पर्सपेक्टिव, ऑनेस्टली. एंड आई डोंट मीन टू बी डिसरिस्पेक्टिव, बट दैट्स द रियलिटी, राइट? मतलब वो बहुत ही बेवकूफाना आर्गुमेंट है कि हमने ये प्लेयर ले लिया तो हम आपसे बड़े हो गए, राइट? वो क्या बोले उसमें अब, राइट? तो बट डी, आई विल कम टू यू नाउ एंड जल्दी विल रैप दिस अप, एंड बिकॉज आई बहुत देर से बात भी कर रहे हैं, तो बिकॉज मैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं. बट क्या बोल रहे हो? Yeah. D, you're a little lost. Hello? Can you hear me? Yeah, I can. Okay. हाँ. Everything froze on my screen. तो मुझे आगे से क्या हो रहा है? बोलो. क्या हो रहा है? I think there's a lag. I think D is getting stuck. I think D, एक काम कर, D छोड़ के वापस आ जा. अनुशेष का एक क्वेश्चन है, which of these three matches will entertain the most? Barca, Napoli, PSG, Sociedad, Atletico, Inter. Asking because other ties are one-sided and boring. I think Inter and Atletico. We already discussed this. PSG, Sociedad, एक चीज ऐड करना, या मैं वही बोलना चाहता था, बिकॉज रियल सोसिएडाड ऑफ कोर्स ये थोड़ा लैटर पार्ट ऑफ द सीजन में थोड़ा फिजल आउट हो गया, बट दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ इंजरीज, एंड ऑब्वियसली कुबो वाज एट द एशियन कप पार्टली एंड ओयारज़ाबाल हैज बीन इंजर्ड. बट जैसे रियल सोसिएडाड ने ग्रुप टॉप किया, the way they played against us, and not just us, the way they blew past Benfica also, बहुत अच्छी side है. They're a side to keep an eye on. With also you have to notice with PSG's defensive struggles, at least at home you can maybe hope, like, you know, if you're hoping for a Sociedad win, then yeah, sure, you can hope that they could do something here. I think it's going to be closer than ज़्यादा लोग जितना expect कर रहे हैं. I think PSG बहुत ज़्यादा benefit of the doubt.
Yeah, नहीं, but generally वो trend होता है ना कि PSG usually किसी को भी draw करती है, they tend to give PSG the edge just because why not? But I feel ये बहुत close game होगा. The only downside is कि Sociedad की injury list थोड़ी ज़्यादा बड़ी है. That's the only downside right now. प्रणित, योर पिक ये तीनों मैचेस में. एंड डी का क्वेश्चन मैं रिपीट कर सकता. आई आस्क्ड द क्वेश्चन बट डी डिडंट कैच इट बिकॉज उसका इंटरनेट बहुत स्लो था. सॉरी. क्या बोलता है प्रणय, तेरा पिक ये तीनों मैचेस में? एथलेटिको, इंटर. Atletico, Inter, I think Atletico most likely because अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये तीनों मैचअप्स में तेरे को क्या लगता है सबसे इंटरेस्टिंग मैच कौन सा होगा? अच्छा मैचेस में कौन कौन से मैचेस एथलेटिको इंटर और कौन कौन से मैचेस में अगर मैं पिक करना हो तो एथलेटिको, इंटर. आई थिंक हेवीवेट्स के हिसाब से देखे तो इट शुड बी एथलेटिको इंटर ओनली. ऑल्दो लाइक पीएसजी सोसिएडाड थोड़ा वैसा होगा गेम कि you know if PSG loses then the internet will break obviously because we all know there might be some possibility but the game that I don't know about the rest but मैं तो Inter Atletico ही देखूंगा. Like that is the game that I will watch above the games you mentioned. करेक्ट. इताची उचीहा, अभी इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैं सीख गया हूँ. इताची उचीहा हैज गिफ्टेड 10 मेंबरशिप्स. तो थैंक यू सो मच यार इताची. एंड जिसको भी मेंबरशिप्स मिली हैं प्लीज थैंक इताची. थैंक यू सो मच यार इताची, रियली अप्रिशिएट इट. डी, द क्वेश्चन आई वाज आस्किंग कि बार्सिलोना का जो एक सजेशन है कि सेल अ पार्ट ऑफ बार्सिलोना. हाँ, तो तेरे को जीतू लगता है, answered that, no, I think. हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट अबाउट Yeah. यू नो सुपर लीग में. मेरे को नहीं घुसना है, नहीं तो ये कल सुबह खत्म होगा और वो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता. ठीक है, हाँ. सुपर लीग वाले डिस्कशन में मैं नहीं घुसूंगा. लेकिन लेट्स मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये जो रन की बात हम करते हैं, अभी रियल मैड्रिड के भी बहुत सारे इंजरीज हैं. अभी सेंटर बैक के बिना तुम लोग जिरोना के साथ जीते हो. तेरे को लगता है ये जो रन की बात हम लोग करते हैं कि रन पे निकल जाएंगे, यू थिंक, हालांकि आई वुड नॉट बेट अगेंस्ट इट, ये हर बार बोलते हैं एंड इन द एंड रियल मैड्रिड विंस द चैंपियंस लीग, यू थिंक दिस सीजन वुड बी डिफरेंट? So कि compared to last इंजरीज. season, ना I can say कि नहीं. So देखो, last season as such there were no injuries ऐसे you can't point out. Last season was just well, Benzema was injured and he was not in the best of form also last season. So I think that apart from that, you can't really cite last season ka injury as a thing. But this season, despite injuries, what is different for Real, I can tell you, is the bench. If you had to ask me to point out three things now, usme one top thing mera would be having a good bench. Itne saalon se we had Mariano, we had Asensio, who was like either a hit or a miss, no guarantee. But we had like Mariano and we had Odriozola and all of these people that you could consider them like they were not going to create history or they were not going to make any difference. But this time, people coming off the bench, you can hope for something. Like if Jude Bellingham was there, he's not there, but you have a Brahim on the bench who has played really well and is in great form. Ye time pe you have Joselu who has been really good also, and everybody has some contribution to make. Ye time coming off the bench, जो last time बिल्कुल नहीं था. So है injuries, and ye time the other big thing is that Carlo has managed to find one formula because he has managed to find kahan pe we were really lacking last season, and that is on the defensive duties wala part. Now here it is full credit to him because despite having, like you said, no CBs last time at all, and मतलब सभी injured है, and the starting goalkeeper से लेके everybody has been injured, but managing compensating for that with a Chouameni, a Camavinga, and giving Kroos more of a defensive role, asking Vinicius and Rodrigo to also sort of track back and perform defensively. He has learned that on the transition we were not doing a good job at all, and we were leaking goals last season. So ye time he has also learned. He has changed the style of play. तो ये सब काफी डिफरेंस है. तो लास्ट सीजन तो मतलब यार वी वर ड्यूरिंग द सेकंड लेग ऑफ द गेम अगेंस्ट सिटी,
I'm like, look at the people coming off the bench for City, like Mahrez and all these people are coming off the bench, और हमारे यहाँ पे Odriozola, like तुम क्या, what is the, you can't even compare. I'm like, क्या bench है यार हमारा, कोई भी नहीं है, and this time at least that is not an issue. So वो एक बहुत बड़ा change है Real में ये time, and that allows me to be a little hopeful. But ये भी है कि see, it's a Champions League goes on for such a long time, and it always happens, the big games always pick up towards the lag end of the season, right? जहाँ पे अभी Rudiger might come back, कोई और आएगा, कोई और निकल जाएगा. What if we lose Vinny again to an injury? What if we lose someone else to an injury? तो इसलिए वो तो बोल ही नहीं सकते. But the management this time, despite the injuries, is something which is amazing, and that kind of if you had asked me the same question around 2 months back ना, मैं इतना confident नहीं रहती. But now I feel like Real can actually like go further than I had hoped them to go in the Champions League this time. I'm more confident, definitely more confident than last time, for sure. यार इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल भव्या हैज गिफ्टेड अ मेंबरशिप, सो जिसको भी मिली है मेंबरशिप, थैंक यू सो मच. एंड आप भी थैंक यू बोलिए भव्या को, थैंक यू सो मच. यार अब एंड करते हैं. Thank you, बस Bhavya. लाइक Thank you. I'll just end. Thank you, Bhavya. End the. क्या हुआ? थैंक यू भव्या. अबे चल क्या रहा है, मतलब लैग है बोला कि ना तूने निधि. Right. So, as a City fan, what you choose, bro? Win some treble this year or not? यार एक तो यार तुम लोग ये Facebook के क्विज खेलना बंद करो. मतलब ये Facebook के क्विज होता है ना कि ये 5 सवाल का आंसर दे दो तो I'll tell you what kind of a strawberry you are. ये वैसा क्वेश्चन है. ये सब क्या पूछते हो यार कि मतलब कि चीज के If you खाओगे answer- कि मतलब If you answer these 3 questions correctly, you enter a lucky draw to win iPhone 20. हाँ मतलब और मतलब उसको टाइम आउट दिया, फिर आके उसने वही सवाल पूछा. रुक जा भाई, मतलब ये कैसा सवाल है यार, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं है. राइट. भव्या सेज मैं तो चेल्सी फैंस हूँ, कौन सा मैच, अरे हम लोग साथ में मिलके देखेंगे भाई, हम ठीक है, हम लोग दोनों साथ में मिलके. भव्या थैंक यू सो मच. बढ़िया, आ जा तू, साथ में हम लोग बैठ के चैंपियंस लीग यूरोपा भी देखेंगे, ठीक है. बट यस प्रतीक, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग अ टाइम आउट और मे बी इवन अ बैन. ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब बस स्टॉप पे लड़की देख के ऐसा बिहेव मत कर यार, मतलब रिलैक्स. नहीं बस स्टॉप पे लड़की देख के भी बिहेव ऐसा मत कर, मतलब वो भी मत. हाँ नहीं, वही बोल रहा हूँ, दोनों मत कर. वैसा बिहेव मत कर यार, रिलैक्स, डोंट डू दैट. राइट. बट एनीवे, कमिंग टू क्वेश्चन, एंड एक एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगा और फिर विल एंड द लाइव. स्टार्टिंग विथ परम, मेरे को बता तेरे हिसाब से इस सीजन, एक तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई कि चैंपियंस लीग कौन जीतेगा, फेवरेट्स, एंड वो तो बहुत बार हो चुका है. इंटर कितना आगे तक जाएगी तेरे को क्या लगता है? गिव मी अ शॉर्ट आंसर. आई थिंक, आई मीन ये जो डार्क हॉर्स का टैग आई थिंक अपने जो स्टार्ट में डिस्कस किया था, आई थिंक थोड़ा वो अंडरप्ले, आई थिंक वी आर अ बिट being a bit underplayed in the sense कि I think we are more than a dark horse. I agree. वो एक unfortunate situation सी है कि we are facing Atletico. That's the only thing that holds it back. But I think अगर Atletico को हरा देंगे then तो why not? I think we have the reason to believe that we can go all the way, because last season's squad, which wasn't even as complete, a season where we had 12 defeats in the league, where we only in the last 3 months qualified for the top 4 of the Serie A, where we were struggling, half the bench was not even that good. This is a season where quality ज़्यादा है bench में, generally speaking. You have a world-class defender like Benjamin Pavard, you have Jan Sommer, performing at a very high level, Hakan Çalhanoğlu, again performing at a very high level. There is every reason to believe that we can go all the way. Again, for some it might sound a bit arrogant, that's not the intention here. But I feel अगर ये Atletico game हो गया, that will prove a lot of things in the sense कि we can stylistically beat teams that set up well. And obviously, Dhinuka pointed out earlier that Atletico attack well, which is absolutely right. But they also leave a lot of gaps. But अगर Atletico को इधर हराए तो वो एक जो स्पेनिश टीम का कर्स है इंटर पे कि फेवरेबल रिकॉर्ड नहीं है, आई थिंक दैट then goes a long way and gives us a huge mental boost. एक और फैक्टर है कि
प्रायोरिटाइज क्लब कर रहा है सेरिया टाइटल, कुछ भी बोलो आप, बिकॉज वो सेकंड स्टार चाहिए क्लब को मोर इम्पोर्टेंटली. अभी वो 7 पॉइंट की गैप है, विद 1 गेम इन हैंड 10 पॉइंट हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट यूवेंटस और AC Milan by any means. We are not taking anything for granted over here. So क्या रोटेशंस होंगे, कितने होंगे, वो देखना पड़ेगा, बट आई फील वी आर मोर देन अंडरडॉग्स. आई फील we should be considered a team that can go on and win it this season if we get past Atletico. This is the gray area for me. Then drop it depend. और favorites की बात करें तो again I cannot rule. For me it will be Man City or Real Madrid primarily. I know जीतू भाई ने बोला वो Real Madrid के defensive issues and everything, and I agree with him. But as Dhinu ka pointed out, on the contrary, the bench strength is also better this time around. And when it comes to Man City, I think पेप के पास ऑलरेडी हमेशा कोई ना कोई he has showed that he can adapt and come up with a solution. वो 3-5 last season with Stones in that anchor role in midfield with Rodri. So I think these two teams will absolutely be the top 2 favorites, and उसके बाद you can have a third favorite like Inter or if Atletico does well, then why not them? Why should we underestimate them? If they beat us, then they should absolutely be the contenders to one of the contenders to win it. Agreed. एक सुपर चैट आया and then I'll move to Pranay. Did you all know when Jurgen left Mainz, Barcelona win the Champions League? When he left Dortmund against, so Barca has the chance again. Oh, that's an interesting stat. Manish bhai, yeah, I didn't know this. Thank you so much for the contribution and this amazing stat, by the way. Barcelona fans को अपने बहुत ज़्यादा hope दिया है ये share करके. But Pranay, City to win it, City to do the double. I mean, उसके लिए फिर राउंड ऑफ 16 वाले के चैट में ये चीज बताना तो गाइस थोड़ा अर्ली होगा. भाई मतलब come on Pranay, you have to be confident. Currently the best team in Europe, would you say? I mean, as per अगर मैं बात करूं करंटली तो हाँ बेस्ट टीम है भाई, इतना क्यों शर्मा है? हाँ एग्जैक्टली, जस्ट से यस है द बेस्ट टीम. अगर बेस्ट टीम है यूरोप में, अगर है बेस्ट टीम तो हम है ही, बेस्ट टीम तो हम है ही, बट अभी इंग्लैंड में नहीं है ना. अभी हम इंग्लैंड में वी आर ट्राइंग टू कैच अप द टेबल. एक गेम कम खेला है हम लोगों ने. वो तो हमेशा होता है यार. But बोल, you think City to win the league again? Win the league मतलब sorry, hopefully Champions League. मैं वही तो बोला थी भाई. I'll be like Guardiola, you know, like we'll take one game at a time. So it's too early. Maybe जब हम फाइनल पे स्ट्रीम कर रहे होंगे मैंने सद मॉन्ग के चैंपियंस लीग फाइनल से पहले इसी सेम पैनल के साथ hopefully as per what I think चांसेस होने चाहिए. पिछले साल के चैंपियंस प्लस पिछले साल के रनर्स अप एंड पोटेंशियल यू नो फाइनलिस्ट सब इसी पैनल पे ही हैं. तो मैंने सुना मॉन्क की स्ट्रीम पे ही करेंगे UCL फाइनल से पहले. सो टू अर्ली, बट हाँ राउंड ऑफ 16 में आई एम कॉन्फिडेंट. बट अभी मैं बस चेंजेस करा था अपनी फैंटेसी टीम में क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है डियास येलो कार्ड लेने वाला है. ही विल बी सस्पेंडेड इन दिस गेम एंड या आके गोइंग फॉर आके. प्रणय ने एकदम फेब्रिजियो रोमानो वाली बात की है. बहुत कुछ बोल के कुछ नहीं बोला है. फेब्रिजियो रोमानो नहीं, जेरार्ड रोमेरो. there is a surprise signing, guys. There is a surprise signing. Okay, I'll tell you. Oh God, I'll never. Something is happening. क्या स्कैम पुल किया था भाई. There is a black bus that has arrived, but I will tell you the details about it, okay? At 3:30 a.m. when just 2 hours before the transfer window, guys, okay? माँ कसम भाई, क्या स्कैम रन किया था वो आदमी ने. गजब था भाई. और पूरे लोग ऐसे जग के रात भर कौन है, लोग मेसी से लेके कुछ लोग रोनाल्डो बोल दिए. बस से और भाई देखो बस से याद आया एक और भाई. देखो यूरोप में death comes in a white bus, भाई. So I'll just say it that way. That's it. क्या बोल रहा है? वो white bus met with an accident, you know that. In Europe, bus actually met with an accident. हाँ क्या बोल रहा है?
मतलब मैंने बोल दिया, जिनको समझना था वो समझ चुके हैं. Like the two guys नहीं, and I think Param also. मेरा इंटरनेट अटक गया भाई, मेरा इंटरनेट मैं अटक ये गया. बोल रहा था कि in Europe the death arrives in a white bus. You know, अगर हम हाँ, buses की वो बात कर रेफरेंस, रहे हैं. नहीं वो रेफरेंस मैं समझ गया, वो रेफरेंस तो मैं समझ गया. बट I saw डी, this हाँ amazing सॉरी. meme. Okay, no, I was just saying. So the team bus met with an accident. Okay, Leipzig के जाते हुए like training के लिए I think, and someone had said कि bus भी injured हो गई. Like this season is absolutely amazing. Okay, because one more injury of the bus, and then someone posted a thing with like Kamavinga as the bus. It was just hilarious that like Kama's face on that bus they put, and they're like, "तो क्या हुआ if there's an injury to the bus?" We have Yeah, come away. sorry. बट जीतू भाई, धेनुका, स्टार्टिंग विद धेनुका. डी, कॉन्फिडेंट, नंबर 15 दिस टाइम. Confident, more confident than last time, but I honestly think that City are favorites. Honestly बोल रही हूँ. We are one of the favorites, but कुछ भी बोलो, at the end of the day, we don't have Courtois. We don't have a Benzema replacement. Okay, and we are one more injury away from like things dismantling. And see, the thing is, in a league game, right? Like you can, it's a different strategy. Champions League mein na, you are playing, and especially when you're playing at the highest level, in the sense that you're playing in the semis and the finals, quarter semis, finals, whatever. You can't afford those like mistakes that you make. I can't say that Real Madrid was playing a flawless game. We missed chances. We crashed out of the Copa del Rey because we missed a ton of chances, right, against Atletico. तो वो flawless football मैं नहीं बोल सकती हूँ खेल रही है. And these things come to haunt you in the Champions League because you have to be performing at the highest level on that particular day. And इसमें I would say that the difference of having someone like a Courtois on goal, um, and the kind of form that Benzema was in when we won last, it makes all the difference. And so that is the only reason I would say that my expectations are much higher than last year. I can tell you that. Last year I did not have expectations. I'll be very fair. And that's why I kept telling you, even on your channel, I said, Ki, I don't know. We are not favorites. Because we beat Chelsea, but Chelsea were already down and out. Last season also, they were not firing on all cylinders. Chelsea ko beat karke aaye. And in the City game, you could see all those, what is it called? All the problems kind of like one after the other. It was like popping up, and we were like, "Bas yaar, let's end this game." It Would was bad. So would you yeah, say City are firing on all cylinders now, D? Or do you think their barrels are not full yet? I think City are also not as clear cut as last time. This is my see. I don't watch Huh. all City games. Okay, so I can't like be Okay. a definitive judge of like how I monitor Real Madrid much more closely. I watch every single game, and I monitor like La Liga very closely. But I don't watch all things, so I can't say. But from whatever I've seen, I would say that I was more afraid of City last season because there was something about them. Like the strategy and the tactics were like one thing, but the execution of it was like pitch perfect. Having said that, I see a slight improvement in Real Madrid, and so I would say that and again Champions League may the other difference is that all the difference is on that particular day. What happens on a particular day, right? Especially in the True. final, it's not two legs. So I don't want to bring up Real Madrid versus Liverpool, but it's just that day. It's not reflective of an entire season or anything of that sort. It's one day. So given that, I would say ki I feared last season's City more. I don't know how much y'all will agree with me, but that is my impression. I'm definitely more confident with Madrid, but I wouldn't call Madrid favorites. I would still call City favorites. Does that जीतू make भाई, sense? Yeah. So मतलब firstly, I just want तूने बहुत गोल बात किया है, बट ठीक है. गोल नहीं रे, मतलब मैं बोल रही हूँ कि सिटी अभी भी मुझे फेवरेट लग रहा है क्योंकि हमारे पास कोर्तवा नहीं है. मेरा डे वन से वही एक बड़ा प्रॉब्लम है. लाइक यू नीड दोस काइंड ऑफ पीपल. लाइक लूनिन एंड केपा डोंट इंस्पायर दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, no matter how good Lunin has been this season. So these things matter Kepa तो on the चूतिया है. big days.
Kepa तो जाने दो, ठीक है. Now he is हाँ. not the starting preferred No, as goalkeeper. compared to But Lunin, even Pranay bhai, right, compared to Lunin Lunin, also Kepa made is mistakes. चूतिया. Like he's just horrible for Real Madrid. Maybe he's very good for Chelsea or maybe तुमको चाहिए तुम ले लो, but he's वहां चूतिया. पे भी तो he had a so anyway, so Kepa aside, हाँ. ठीक है. Lunin also, Lunin had a Kepa really hate. bad game. हाँ. This Jeetu, I don't know why he hates Kepa so much, and so many in the fan base also hate. इतना क्या hate करना है यार, ठीक है, like it's okay. Okay, He that's also for a had, different conversation. Coming back to that's the a main different conversation. conversation. हाँ, Let's go yeah. like Lunin, हाँ. right? Lunin also had a bad game on that day, like the Copa del Rey game when we crashed out. Hmm. And he can also have those kind of games because he has not played like at the highest level so much, right? This is the first season we are trying him out in all these big games. So that doesn't inspire that kind of confidence. And on that big stage, you need a Courtois like performance, and you need like a Benzema like performance. And we are definitely better than that's why last season, but still we are not playing flawless football. If that's what I'm trying to say. Jeetu bhai, Yeah, I will just you want to give say me a one. straight answer? Yeah, I'll give you straight answer. I'll only give straight answer. Firstly, Param bhai is really underplaying the fact that he does not have Lukaku anymore in his team. So he already has gone up from last year for me. Like because Lukaku is in Roma, they are already very strong because of that fact. So I wish you well, and I hope you beat Atleti. City, Madrid, Bayern favorites for obvious reasons, but ये Bayern with uh, that defense? yeah, listen. Again, it's a look at. I mean, मैं कौन होता हूँ? मैं तो हमारे डिफेंस देखो यार. चूआमेनी और कारवाल को हम डिफेंस में कर रहे हो. मैं बोल रहा हूँ रियल मैड्रिड. कोई ये देखेगा बोलेगा ये आदमी चूतिया है क्योंकि तुम रियल मैड्रिड का नाम ले रहे हो. बट इट्स अ मेंटालिटी थिंग, राइट? इट्स अ मेंटालिटी कि तुम जब आते हो तुम द ओनली थिंग I hope that will happen for City is that do they have the fire in his belly? Can Pep Guardiola keep pushing his team to be like, no, we have to do a double. We have to win back to back. So if he can push his team, then absolute favorite. But will he win? That I mean that's for anyone to guess. Top 3 favorites, but मैं ये मानता हूँ कि necessary नहीं Jeetu है कि bhai, top 3. Yeah. just 1 second. Acha, Pranay has got to leave. So thanks Pranay, thank you for making the time. Thank bhai. you. Yeah, Right, हम लोग भी बस एंड ही Hi, कर रहे हैं. Pranay. तो जीतू भाई को तो मैं क्योंकि मैसेज ही करने वाला था, but thank you guys. Gotta go. Guys, bro. Real Madrid का vlog मैंने बनाया, so please do check it out. जीतू भाई वो तुमको चेकआउट देख किया लिया और already. अगली बार आप Planet जाओ TFB मैड्रिड तो बता के जाना, तो आपको 25 यूरो बच जाएंगे. आपको वो पे नहीं करने पड़ेंगे. अरे Planet यार, TFB अब पहले बताना था ना जाने के पहले. 25 यूरो का नुकसान हो गया. बहुत बड़ा घाटा हो गया यार, मेरे साथ स्कैम हो गया यार 6 लाख रुपए का. ठीक है, ऑलराइट गाइस. तो Planet TFB का हैंडल जो है वो टाइटल में लगा हुआ है. जाओ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो. रियल मैड्रिड का व्लॉग आया है और उसके अलावा टैकल फ्रॉम बिहाइंड भी है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करिए. बट जीतू भाई विल टेक योर आंसर एंड देन वी विल एंड इट. और उसके बाद आप तीनों से एक सवाल मेरा और भी है, फिर देन वी विल एंड इट. नहीं, बेसिकली टॉप 3 फेवरेट्स आर दीस, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये 3 लोग जीते और दैट इज इट. बट आई होप हम जीते. ऑफ कोर्स आप अगर रियल मैड्रिड ये हमारे हम नहीं, लाइक आई एम टेलिंग, मेरे लाइफ टाइम में भी आई हैव सीन रियल मैड्रिड नॉक्ड आउट ऑफ द चैंपियंस लीग मोर देन आई हैव सीन रियल मैड्रिड विन द चैंपियंस लीग, राइट? एंड दैट्स सेम फॉर Denuka. आई थिंक we've seen a team lose more than I've seen a team win, which is natural. But we go into every year. हमने 12 साल 9 चैंपियंस लीग और 10 चैंपियंस लीग के बीच में रहे. हमने हर 12 साल में ये कहा है अब por la décima means let's go win the 10. तो हमारा ये मेंटालिटी है. हम पागल है कि हम बोलते रहते हैं कि अपोला, हम बोल रहे अपोला डेसिमो क्विंटा और अपोला 15. हम बोलते जाएंगे जब तक हम नहीं जीते. हम बोलते जाएंगे. ये रियल मैड्रिड की मेंटालिटी है. इसको आप डिल्यूजन बोलो, इसको आप पागलपंती बोलो, इसको बोलो आप टॉक्सिक बोलो, आपको जो शब्द देना है सब मंजूर है. बिकॉज रियल मैड्रिड अगर चैंपियंस लीग में है तो उसको जीतने की एक मेंटालिटी लेके जाता है, और अगर नहीं है तो राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द कोच टू द कैप्टन ऑफ द टीम विल बी फायर्ड लाइक भाई तेरे में नहीं है तू निकल. ये पागलपंती है. बट बिकॉज हम राइटफुली रॉन्गफुली समझते कि ये हमारी ट्रॉफी है, हम सब जिसे हमने शुरू किया था, ये तो हमारी पार्टी है, हम होस्ट है, तो हम कैसे नहीं है. ये इंटाइटलमेंट है हमारे में.
तो इसलिए मैं बोलता हूँ Real Madrid, even with our defensive woes, even with our crazy center back pairings, and even with Carlo, I mean, Carlo has not complained once. उसका मेंटालिटी अगर आप देखो, कोई भी मोरिनियो होता, मैं किसी को बोला था उस दिन, कोई मोरिनियो होता था ना, इतना रोज देता था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कार्लो बोला आई एम हैप्पी विद माय टीम. भाई, आई एम नॉट हैप्पी विद द टीम एंड आई एम अ फैन ऑफ द टीम. You are the coach of the team and you see these guys every day. How are you happy with the team? But upward, we are in it to win it. Simple सी बात ही है. हाँ, बोलो. चलो भाई, तो Just that's one what thing. One thing in the chat, they've mentioned one thing. Somebody has asked ki why wouldn't we play? Brahim is not in whatever. I don't. I read something like they should play Brahim and Joselu. करके. So I doubt that, guys, because when Jude was not there, he suffered one spell of injury has already happened this season, and Brahim did step up in those games. He played really well. So there is no reason why, and he is very much a like-to-like replacement in terms of position and playing and whatever for Bellingham. So I don't see. So Joselu will come on as a substitute only, I think. I don't think he will start with him, and he'll continue with the same formation. So, sorry. All वही right, वही guys. बोलना था. All right, guys. So since this is the Liverpool channel, एक last question मैं लिवरपूल पे लूंगा. यूरोपा लीग में लिवरपूल कहां तक जाएगी परम, अकॉर्डिंग टू यू? I'll have to give this a thought for a minute. Maybe Jeetu can answer. I'll have to give this a thought. Till you तब Yeah. तक तू सोचता है, तब तक मैं जीतू भाई के पास जाता हूँ. जीतू भाई, where Nah. do you think Liverpool ends up in Europa League this season? I am looking literally at who else is left in the Europa League. लेवरकुसन, रोमा. एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर लिवरपूल जीत भी जाती है यूरोपा लीग, तो मुझे लगता है ये थोड़ा लिवरपूल की तौहीन होगी, बिकॉज लिवरपूल शुड इन चैंपियंस लीग एंड नॉट एस्पायर. बट आई अंडरस्टैंड कि क्लब जा रहा है, आपको चाहिए कि वो ट्रॉफी जीत के जाए. डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट, नाउ दिस इज वेयर इट्स द एंटी जावी कि क्लब कंट्रोल्स हिज क्लब, कंट्रोल्स हिज प्लेयर्स, दे विल गिव एवरीथिंग टू विन इट. I would be surprised if they don't make it to the final. Final में क्या होता है पता नहीं, but final तक तो जानी ही चाहिए for the club, for the size of the comp. It should go to. I hope they go to the final. डी, तू क्या बोलती है? I want Liverpool to win it for Klopp. I mean, I'm a sucker for a story like that, and I definitely want that to happen. And I think Leverkusen is injuries is one thing. If you guys can sort your injuries out, then Liverpool, I think, can go all the way for sure. But yeah, Leverkusen, it'll be interesting to see. They've not been they are I mean, they are playing phenomenally well in Bundesliga. Of course, everyone and the grandmother knows that. But let's see how, like, the Champions League and Europa. These are a completely different. It's a different canvas. It's a different stage. So you don't really have to be league leaders to actually do well over there, because it's completely different. So I think Liverpool pips them on experience. They have more experience playing on that big stage. So I would put them as favorites, honestly. But if you can get your injuries sorted, because it's एक गया एक आता है यार, क्या है, like it's like a revolving door. So पार्थ देख यार, ये तूने मजाक में लिखा है तो अच्छी बात है. आई एम श्योर अगर तू कभी जाबी अलोंसो से बात करेगा ना, ही विल बी लाइक कि क्लॉप मेरे को सिखा दो कुछ, राइट? इनफैक्ट मैक्सिमम कोचेस यही बोलेंगे. बट एनीवे, ये शायद आपके लिए बैंटर होगा, मतलब इट साउंड्स स्टूपिड, नॉनसेंसिकल. Sorry Param, then we'll end this. So just to keep it very short, I think, yeah, sure, Liverpool should be one of the favorites. I mean, other than that, you have Leverkusen, AC Milan, AS Roma. Also, I think Benfica, Sporting are there, but Benfica was very poor in the Champions League. They were terrible. Sporting is one side I would keep an eye on along with Leverkusen. I feel AC Milan do have the depth this time around to do something over there, given that ये उन पे है. I mean, they will anyways qualify for the Champions League, but I'm sure they will want to do well in the Europa League in comparison to past record. And Roma, I don't think they have the overall quality to go all the way here this time around. They don't have. While De Rossi has done well so far, I don't think he can go all the way or even reach a semi-final. So I think Liverpool's to lose, but I would keep an eye mainly on Sporting, AC Milan, and Leverkusen. Other than that.
ऑलराइट, चलो भाई लोग, 1 मिनट में वैलेंटाइंस डे है, सो जस्ट ऑन द ईव ऑफ वैलेंटाइंस डे हम लोग खत्म कर रहे हैं लाइव को। तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड हैप्पी यूसीएल टू एवरीबॉडी। ऐसे नहीं जीते भाई, ऐसे करोगे तो आएगा। ये मेरे साथ मैक में हो रहा है ऑफिस में। मैं मीटिंग में ऐसे बैठता हूँ, मेरी आदत है ऐसे बैठने की, एंड देन द हार्ट्स कम आउट। आई एम लाइक ये क्या चल रहा है भाई, राइट? राइट, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीबॉडी and enjoy your midweek. Champions League शुरू हो गया है, so there is something to talk about during the week and there will be a lot to talk about in the week. तो बाकी चलिए मजा करिए और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बॉम्बे पीनिया को बिल्कुल आप जाके सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मोर इम्पोर्टेंटली प्रणय टीएफबी और टैकल फ्रॉम बिहाइंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू देम। और उसके बाद भी थोड़ी अगर श्रद्धा बच गई हो तो मैनेस इन द मॉन्क को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर 22,500। विल सी यू सून। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स। Alamat. Bye.